की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। ज्ञान और विज्ञान यहीं से सबने पाया सारा, सबने पाया सारा। कुछ भूलों से हारा फिर से जीते देश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागशील सेवा व्रतधारी युवा जगे पुरुषार्थी। वैज्ञानिकता विनय सभ्यता स्वभाव हो निस्वार्थी, स्वभाव हो निस्वार्थी। देशभक्ति में तेजस्वी हो फिर समाज यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। सारी दुर्बलता को
समर्थ बनाओ। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को, राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर, शुभ संदेश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा, गीता परिवार। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुराः पाणिर्मधुराः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं
मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
सच्चिदानन्दम् वासुदेवम् व्रजप्रियम्। Jai Shri Krishna. Am I audible? Jai Shri Krishna, everyone. सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। संग्राममय जीवन धरा पर विजय रथ ले हम चले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। हो समर्पण लखन जैसा, राम जैसा त्याग हो। भीष्म सा हो नियम पालन, शौर्य में अभिमन्यु हो। आपदाओं को कुचल कर वीर बालक हम चले। सद्गुणों की साधना में ध्येय ज्योति नित जले। बुद्ध जैसे कारुणिक हो, धीर हम महावीर से। ध्रुव जैसे निश्चय योगेशम् सच्चिदानन्दम् वासुदेवम् व्रजप्रियम् धर्म संस्थापकम् वीरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा। गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा। गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। Jai Shri Krishna. Yeah. Jai Shri Krishna to each and everyone who has joined here for the interpretation session. A warm welcome to all sadhakas who have joined Geeta Parivar for learning how to recite Geeta flawlessly with Aghad and with proper Sanskrit grammar. Moreover,
you get to know the meaning in these weekly interpretation sessions where the learned speakers of Geeta Parivar yeah. A warm welcome to all the sadhakas who join Geeta Parivar for learning how to recite Geeta flawlessly with proper Aghad and Sanskrit grammar. Moreover, you get to know the meaning in these weekly interpretation sessions where the learned speakers of Geeta Parivar deal in detail with each shlokas of the chapters. You're all very lucky for Lord Krishna has chosen you all to learn Geeta. पढ़े पढ़ाए और जीवन में उतारे. गीता पढ़े पढ़ाए और जीवन में उतारे. This is the beautiful concept of Geeta Parivar. So you all are here to learn Geeta, and once you learn, you can serve as a Geeta Sevi in so many this are hello. Jai Shri Krishna, everyone. A warm welcome to all of you. On behalf of Geeta Parivar, I welcome all of you in the interpretation session of the 12th chapter. A hearty welcome to all of you. The whole week you have been learning the shlokas, and now it's time to go for the meaning of the shlokas. To begin the session, I invite, with a prayer, I invite Vijay Lakshmi Purohit ji. She is from Indore, Madhya Pradesh, and is serving as a techno star in L2, and she is with us since May 2021. Vijay Lakshmi ji. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं Thank you, Vijay Lakshmi ji, for the beautiful and melodious prayer. It is rightly said that everything is pre-written, but with prayers, it can be rewritten. So, moving forward, we move for the lamp of knowledge to be lighted. For the deep prajwalan, we have with us Meenal Kabraji. She is from Yevala, and she is joined Geeta Parivar from July 2020 and is serving as a core trainer from L1, L2, L3, and L4. I request Didi. निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः
Thank you, Meenal Didi, for the beautiful Deep Prajwalan, which spreads the knowledge of Bhagavad Gita throughout the universe. Yes, the most awaited part of the session, the interpretation session. The speaker for the day is respected Geeta Pravina Rupal Shukla Didi. She is a student of Advait Vedanta in Kochi, and she's a disciple of Swami Govindev Giriji Maharaj. And in this online Geeta classes, she is leading us, motivating us, and guiding us in all the departments. So now you are all eager to dive in the ocean of knowledge given by Rupal Didi. I request Didi to please start the session. Jai Shri Krishna, everyone. Let's begin with the prayer. Sada Shiva Samarambham Vyasa Shankara Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vande Guru Paramparam. Jai Shri Krishna. Pranams to all my gurus from whom I have learned everything, the Gita, how to recite, how to understand the meaning, everything I have learned from them. So first, pranams to them. Firstly, I congratulate you all that we all have completed 10 shlokas of the 12th chapter. We are so fortunate, we are so blessed that we are getting this chance to read Gita, to spread this knowledge of Gita. In 18th chapter, the Lord himself said, 68th and 69th shloka, Yaimam paramanguyyam madbhakte shvabhidhasyati bhaktim mai parang kritva mame vaishyatya samshayaha nacha tasman manushyeshu kaschin me priyakrittamaha bhavita nacha me tasman anyah priyataro bhuvi anyah priyataro bhuvi kaschin me priyakrittamaha. The Lord said, on this whole earth, whoever will teach Gita, whoever will read Gita, whoever will live Gita, that will be my most favorite. Krittamaha, the superlative degree Lord told here. So we are so fortunate, we are so blessed that we are getting this chance. There are so many people, they are wishing to learn Gita, but they're not getting even this chance. But we have got this chance. And on very first day, we were afraid that we would be able to recite the shlokas perfectly or not, or we can just chant the shlokas or not. We don't have any Sanskrit background. We never even spoken Hindi. We don't understand Hindi, and how we would be able to learn the shlokas, Sanskrit shlokas. But Geeta Parivar given us this belief that we can do this. And now, after 1 week of our registration, we have learned 10 shlokas, and we are so confident that we can complete our Gita now and be a Gita Vriti. Keep walking in this on this path and keep learning Gita, because we have got this chance, so we should take complete benefit of it. We are here to understand the meaning of Gita. We all know Gita, we all know this Arjuna, we all know Krishna, but there is much more to know. Everyone wants to know. If we say in Bhagavad Gita, all the questions answers there. So we want to know what is there for us, and we should know. So, here 12th chapter, here we sometimes think that why starting with the 12th chapter? Why not from first chapter? Some people joined the group and they left. They thought they are sending the wrong chapter, 12th chapter. When they messaged us, they called us. We told them, no, this is level 1 pattern. We will teach you 12th and 15th chapter. So why we are starting with the 12th chapter? So the reason is,
12th chapter is the smallest chapter in Gita. Only 20 shlokas. And again, the 15th chapter is the second smallest chapter. It is also having 20 shlokas only, just the meter difference is there. So, we are starting with the 12th chapter, because if we start with this chapter, after learning this these 20 shlokas, we would be having that confidence that, yeah, we have completed one chapter and there are only 18 chapters. So, we can go further on this path. If we start with the first chapter, there are 47 shlokas. When we learn these 47 shlokas after first chapter, we will say, no, I can't do that. This is so long. So getting that confidence is important, that I can recite the shlokas perfectly. Yes, I can also learn Gita. That is the one thing. And then another thing is, this is Bhakti Yoga. The devotion of yoga. The yoga of devotion, this is Bhakti Yoga. If we are not having that much time, after learning this chapter, we would be so confident that yes, we have got this Bhakti part. This Bhakti Yoga we have learned. This yoga of devotion we have learned. So because this is Bhakti Yoga, we started with this so that if we are not having time after this chapter also, so we will be having that devotion with us. So we started with this Bhakti Yoga, the 12th chapter. This was the reason. Now, after completing 10 shlokas, we are gathered here to discuss and to know the meaning of 12th chapter, starting 10 shlokas. Now, whenever we start something, whenever we start reading our scriptures or anything, this is our Indian culture, that there is one nyaya in our scriptures, ghatita buddhim prati ghataka jnanam karanam. What does it mean? It means if we want to understand something, we should know the components first. If I say the table is round, so how we would be able to know that what is table is round, this sentence means? So if we know what does the table mean, what is the meaning of table, and again what is the meaning of round, and why the is there. So if we know the meaning of all these three words, we would be able to catch the meaning of this sentence. So ghatita buddhim prati ghataka jnanam. Ghatita buddhi means I have understood that. So ghatita buddhim ghataka jnanam karanam, the components knowledge. So here also, when we are going to discuss, when we are going to know the meaning of 12th chapter, we should know the components first. So what are the components here? We all know that this Bhagavad-Gītā is the talk between Krishna and Arjuna. So here there are three components. First is Arjuna. Second is Geeta. And third is Lord Krishna, we all know. We already know all these three personalities and the Geeta also, but still, there are some points we should know. Sorry. So there are some points we should be aware of that. Some hidden points might be, you must be knowing that, but still, we can revise that. Revision is always better. So first we will start with Arjuna. Who is Arjuna? Whenever we get this name Arjuna, whenever we start thinking about Arjuna, we always think that Arjuna must be in his late 30s, having sweat on his forehead and so tense, so depressed, and he's like in depression, so stressed that I don't want to fight Krishna. I'm not gonna fight. He sat on the chariot. So we are thinking that Arjuna is like us. He is also stressed like us. He is also depressed like us, as we do. He is having sweat on his forehead as we do. So we are thinking Arjuna is like us.
But the reality is Arjuna is not like us. Arjuna is 84 years so mature guy. 84-year-old, not in his late 30s. Arjuna never got defeated by anyone in his life. He won over thousands of battles. He even made satisfied Lord Shiva in Malla Yuddha. Malla Yuddha is wrestling. He satisfied Lord Shiva. He couldn't defeat him because he was Lord also. So he couldn't defeat, but still he satisfied him. Arjuna accepted curse from Urvashi, but he didn't accept her. That is a different story. We're not gonna deep into that. But he accepted that curse and became Brahmanala at the time of Agyatavasa. But never left his dharma, never give up his dharma. All the Pandavas spent 13 years in exile, but Arjuna spent 10 years more because he was following the dharma. Never give up the dharma. Arjuna got the name Gudakesha. What is the Gudakesha? Gudakesha means who has won over his sleep. And not by any Vardhana or something. He did so much tapas for that. Actually, he wanted divine weapons from the lords, Divyastras. So, he wanted to do tapas. And whenever he feels sleepy, that sleep disturbs his tapas. So, what he does, okay, now I'm not going to sleep. I will win over my sleep. So, he just selected one tree at the bank of the river. And that tree's branch was going in that river. So, that was the situation. What he used to do for 6 months, he repeated that cycle. He used to go and sitting on that branch. Whenever he feels sleepy, he falls down. Again, he goes back and sitting on that branch. And whenever he falls down, again he falls in that river. Again, he goes back, sitting on that branch, again feeling sleepy, again falling down. So this was happening. But after 6 months, Arjuna won over his sleep. So this is Arjuna. Arjuna is not like us. We are thinking, Arjuna went Sasharira Swarga with his body. No one could go there. Trishanku, one king was Trishanku. He wanted to go there. But he asked Vasishthaji. Vasishthaji just denied, no, I can't do that. He asked Vishwamitra, Rishi Vishwamitra. Vishwamitra said, okay, I will do that. So Vishwamitra sent him in that Swarga, in that heaven, and again Indra kicked him back. And he was hanged between the Swarga and Prithviloka. He was hanged between that. So that was the city of Trishanku. So no one can go Sasharira Swarga. But Arjuna went there with his tapas only. Not because he was the son of Lord Indra. No. He went Sasharira Swarga. He was so courageous. He was so good in making strategies. He never disobeyed the dharma. Arjuna did everything righteous only. He never got defeated by anyone. And now in this Mahabharata war, he is saying that no, Krishna, I can't fight. In 2nd chapter, he said, Sidanti mamagatrani mukhancha parishishyati vepathuscha sharire me romaharshascha jayate gandivam sansate hastat tvakchaiva paridahyate nacha shaknomyavasthatum brahmativa cha me manaha
He is telling, Na cha shaknomyavasthatum. I'm not able to stand Krishna. I can't fight. Arjuna has taken vow that if anyone will make me to put my this Gandiva bow down, I will kill that person. And he himself is telling, Gandivam stransate hastat. My Gandiva is falling down from my hands. We can imagine that situation. Arjuna is telling this. Gandivam stransate hastat. My mind is getting disturbed, Krishna. No, I can't fight. This is the situation of Arjuna, who has never got defeated by anyone. So mature. But he is having that depression. He is stressed. That is happening with Arjuna. This is Arjuna. Now, second is Geeta. We all know so much about Geeta. Yes, we are here to learn Geeta. You must have heard before, and we are learning also now. So, what is Geeta? Yes, it is the talk between Krishna and Arjuna. Krishna ji given Upadesh to Arjuna. But here, the Geeta is the part of Mahabharata only. In Mahabharata, there are chapters called Parvas. So in Bhishma Parva, the Bhagavad Gita is written, and Vyasaji separated Bhagavad Gita from Mahabharata, and he presented 700 separate shlokas for us. So this is Bhagavad Gita. Vyasaji written very beautifully. Parthaya pratibodhitam bhagavata narayane swayam vyasena grathitam purana munina madhye mahabharatam advaitaamritavarshinim bhagavatim ashtadashadhyayinim ambatvam anusandadhami bhagavad gite bhavadveshinim. Parthaya pratibodhita bhagavata narayanena swayam. The Gita is for Parthaya pratibodhita, to make him understand. For his knowledge, the Gita was told by Narayanena San, Bhagavata Narayanena San, by the Lord Narayan himself. The Gita was told. The Vedas are the main source of knowledge, but still the Vedas are the exhales of Lord. But the Gita is direct voice of Lord. He himself is speaking these mantras. These are not just shlokas, these are mantras. How much we chant, how much we learn this creates vibration around us. This gives us vibration, this gives that welfare, because these are mantras, these are having that welfare. The gist of Vedas are the Upanishads, and the gist of Upanishads is Geeta, and the gist of Geeta is Sharanagati. And Sharanagati is the sar of the 12th chapter, the Bhakti Yoga. That's why we are starting with the 12th chapter. So this is Geeta. Now the question comes, why Krishna ji told this Geeta to Arjuna only? Why to not Duryodhana? Why to not Dushasana? Why to not anyone else? Why to only Arjuna? So in Shankar Bhashya, Bhagavan Shankaracharya wrote very beautifully, Gunadhikaihi grihitaha anushthiyamanascha dharmaha prachayangamishyati. So, who's having many qualities? Who's having more qualities than others? Gunadhikaihi. Who's having more qualities? If anyone should be conveyed to them, that will be prachayangamishyati, that will be spreaded. But who's not having gunadhikayi, who's not having so many gunas, if the thing is told to them, that will not go to prachayangamishyati, that will not be studied that much. If Lord Krishna has told this Gita to Duryodhana, we must not have this book now to read it. But Arjuna,
Now, how we are just justifying that and how we are judging that Arjuna is having so many qualities, Gunadhikahi, why we are telling he is having Adhika Guna, more qualities? So, in 16th chapter, Lord Krishna is going to tell this himself in 5th shloka. In level 2, you will be getting that 16th chapter to know. 5th shloka. Daivi sampad vimokshaya nibandhaya surimata ma shuchas sampadan daivi abhijatosi pandava. So, O Pandava, O Arjuna, you are equipped with all these qualities. Ma shuchah sampadan daivim abhijatosi. Daivim abhijatosi Pandava. Actually, the 16th chapter started with 26 divine qualities. Abhayam sattva samshuddhir jnana yoga vyavasthitihi ranandamasya yagyascha swadhyaya staparjavam ahimsa satyam akrodha tyaga shantir paishunam daya bhuteshvalo luptam mardavam veera chapalan tejah kshama dhriti shaucham adroho natimanita. Till here 26 qualities bhavanti sampadan daivim abhijatasya bharata. Arjuna, you are already having these 26 qualities. You don't need to worry. Ma shuchaha. So here the Lord told Arjuna, you already have these qualities. Gunadhikaihi. Arjuna already having this. Arjuna did everything right, yes, only in his life. That's why he was so lovable to Krishna. So the Gita was told to Arjuna. Gunadhikai. The reason was Gunadhikai Adhikyatvat. He was having more qualities. This was the reason Arjuna got this knowledge, and making Arjuna Nimitta, Lord given this knowledge to us. So the Gita is the gist of Upanishads, this teeny tiny granth, only 700 shlokas, having all the answers of this entire word. Whenever you want to search, we can just open Gita and we can find our answer. If we have that belief, we will get that, surely. So many great saints, so many scholars, whatever they found in Gita. If we have studied everything but not Gita, it's not done. But if we have studied Gita but not anything else, that is done. That's fine, because Gita is having everything. So just read Gita. We are not having so many years to read Vedas, to read Upanishads. That will take longer time. But if we read Gita, we know the Gita, we have got all the gist of all these scriptures. Gist of gists. There are 1800 authentic commentaries written over Gita. 1800, I'm not talking about translations. Bible is spread all over the world, but it is having 1300 translations, not commentaries. But Gita is having 1800 commentaries and authentic commentaries. If we count the number, not only authentic, so the number is of commentaries in lakhs. How many lakh people have written? So 1800 is the authentic commentaries. Whoever we talk about, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave Balagangadhar Tilak, Einstein, Shankaracharya Bhagwan, anyone we talk about, whatever they found best, they found in Gita. Gandhiji used to say, Gita Mata. Gita is my mother. So this is Gita, having 700 shlokas. Now, the Krishna. We all know Krishna very well. Actually, we know everyone. But yes, one point just I would like to tell about Krishna ji, Lord Krishna. We all know that he accepted the charioteer's role for Arjuna in this Mahabharata war. He was the charioteer for Arjuna's chariot. So Arjuna asked him in first chapter, Senayor Bhayor Madhye Ratham Sthapayam He just instructed him, hey Achyuta, just take my chariot in between
both the armies, so that I can see the opposite army also, and I can see my army also. How much they have done the preparations, and who is there, who is in my side, who is in the opposite side. Just asenayoh ubhayoh madhye ratham sthapayamechyutam. He asked Krishna. But here, what Krishnaji did, he didn't stop the chariot in front of Duryodhana and Dushasana. Arjuna was so eager to kill them. He was so angry on them. Oh, I will go and I will kill them. I will just take the revenge of Draupadi's insult. He was eager to kill them. But Krishnaji didn't do that. What Krishnaji did? Krishnaji took the chariot and stopped in front of Dronacharya and Bhishma Pitamaha. He stopped the chariot in front of them. Why he did so? Because he wanted to give this Gita Jnana for us. What is the connection? He stopped the chariot or whatever he did. Sorry. What is the connection there? So, Arjuna loves them so much. Arjuna is so lovable to everyone, each and everyone. Krishna loves Arjuna so much. Bhishma Pitamaha loves Arjuna so much. Dronacharya loves Arjuna so much. So now, why they are fighting from the Kaurava Paksh? Why not from the Pandavas? Because they were bounded from some pledge, or they had taken some pratigya. So they will fight from Hastinapura only. So they can't go in Pandava's side. Even they knew they were right. So Arjuna loves them. When he sees Bhishma Pitamaha in front of him, Dronacharya is in front of him, his guru. Now what to do? I can't just use bow on them. I can't kill them. He got, no, I can't fight. Now mukhancha parishishyati ve pathusya sharire me roma harshasya jayate. We think our situation, if our family is in front of us and we love them so much, how we can do that? Arjuna was also so depressed. No, I can't do that. So difficult for me. But Krishnaji did all the operation there, and he told the 700 Shloki Geeta. So he stopped the chariot in front of Dronacharya and Bhishma Pitamaha. When all the Pandavas and Kauravas had completed their studies, they needed to present that in front of all the members of that meeting. So everyone went there. Everyone was going and introducing themselves and just presenting what they have learned. So everyone gave a long introduction. I am Duryodhana. I am the king of this great kingdom, Hastinapura. I am the son of the king Dhritarashtra. And like this long Mahavira, Mahabalashali, like this. They were telling long introduction. Everyone. But when Arjuna went there, what Arjuna told? I am Arjuna, the disciple of Dronacharya, going to present what I have learned. Everyone was looking at him. Everyone was waiting. He must say something else. But he just started. Oh, then Dhritarashtra stopped him. Wait, Arjuna. Don't you have any other identity? Dhritarashtra asked him. But Arjuna said, when I am going to present my Vidya, I just have one identity. Who is my guru? From whom I have learned this. I have only one identity. Dronacharya never taught the Brahmastra to his own son, but he taught that Brahmastra to Arjuna. Not even anyone else other than Arjuna. Arjuna knows the Brahmastra, but no one else. Bhishma Pitamaha used to wear white clothes like I am wearing right now. So Shweta Vastrani, he used to wear white clothes. So whenever all the Pandavas and Kauravas come back after playing, everyone is having so much dust. Bhishma Pitamaha loves Arjuna. Whenever Arjuna comes, he just take him in his arms. Because when we love so much,
We just love to hug them. So Bhishma Pitama always used to, whenever Arjuna comes, he used to take in his arms. Everyone asks him, you are wearing white clothes, you will need to change, you will need to wash and everything. So he, okay, it's fine. But he can't stop himself without loving Arjuna. So everyone loves Arjuna so much. So Krishna ji stopped the chariot in front of Dronacharya and Bhishma Pitama intentionally, that Arjuna will say that I can't fight, and then I will give this Gita Gyana to him, making him nimitta to everyone. And he knew that we will be sitting here and we will be just reading these shlokas and getting this meaning of Gita. So he did that. Now let's start with the 12th chapter. This was the preface. The Geeta, the Krishna, the Arjuna, we got to know little bit about them. Now the Bhakti Yoga, 12th chapter. We are starting from here. From 1st to 10th chapter, Lord explained the unmanifest Lord's worshipping. Nirguna Nirakara Brahma. In 8th chapter, Aksharam Brahma Paramam Swabhavoddhyatamuchyate Bhuta Bhavoddhavakaro Visargah Karma Sangitaha. So he explained from 1st chapter to 10th chapter the Nirguna Nirakara Bhakti. Now in 11th chapter, ending 55th shloka, Mat Karma Mat Paramo Mad Bhakta Sangavarjitaha Nirvairas Sarva Bhuteshu Yes Samameti Pandava. So he told this Saguna Sakar Bhakti, the manifest Lord's worshipping. Now Arjuna got confused that Lord, till 10th chapter it was fine that only Nirguna, the unmanifest Lord, was there. Now he is telling about manifest Lord. So he got confused to whom I should worship. So he is just explaining his Shanka, what doubt he has now. In 12th chapter, 1st shloka, let's start. Evam satata yukta ye bhakta svam paryupasate ye chapyaksharam avyaktan teshanke yoga vittamaha. Arjuna is telling here, those devotees who are ever integrated, thus meditate on you. He is telling that Evam satata yuktaye. O Lord, O Krishna, the person who's ever integrated with you, satata yuktaha, always connected to you. Not I'm just right now I'm thinking of Lord, but at next moment I will be forgetting him. No, not like that. Satata yukta, here he told. So who are ever integrated with you and thus they worship you, bhaktaha tvam paryupasate, they worship you paryupasate, ye chapi aksharam avyaktam paryupasate. We will just connect that word here also. So who worship this akshara Brahma, avyakta Brahma? So what about them? Who is the better knower of the yoga here? Who is better? He is asking, his question is. But be careful. This question is not about the Lord, that unmanifest Lord is best or the manifest Lord is best, because we are not having that. We are just having limited mind. We can't think of that which Lord is best. No, unmanifest is best or the manifest is best. No, we can't think that. He is confused between the ways, because we have both the ways. Bhakti Marga is also there to reach to the God, and the Jnana Marga is also there to reach to the God. Now, why we want to reach to the God? What is the need there? We are just enjoying our life. We are living here and we are coming on this earth. We are having the Bangalore also, car also, bike also. We are just enjoying our life. What is the need to get that happiness? Actually, our ultimate goal is to get happiness only. Why we all are doing all this? Why we are doing job to get money? Why we are getting money? Whatever we want to do, we will be doing that. And we will be getting happiness only. For happiness, I am doing everything. All the studies, marriage,
and the children, the money, everything we are doing for happiness only. In 15th chapter, the Lord said, Mamaivamsho jiva loke jiva bhuta sanatanaha manashasthani indriyani prakriti sthani karshati. So in 15th chapter, the Lord said, Mamaivamsho jiva loke, my portion only living on this earth, being jiva bhutaha, being jiva, being this human body, this human. Lord is telling you are my portion. So we ultimately know that we are the portion of Lord only. And we want happiness. That is one aspect of life, getting happiness. Okay, our life is dependent on that, getting happiness. So our Swarupa, our real Swarupa, that oneself, the Lakshana of that, the characteristic of that oneself is Satchidananda Rupa, Ananda Rupa. Our self is just that Ananda Swarupa only, complete ultimate happiness. So if we want to get happiness only, so for all the time, why to just struggle for all the life? Try to and strive to get that Lord. Start walking on that path. You see, you can just differentiate between two persons. One is worshipping and one is not worshipping. Who's worshipping, their mind will be so calm. They will be having so peace. Because how much we are near to the Lord, because they are having that Ananda Swarupa, I mean, that will be me also. I will be happy. So how much we walk on that spiritual path, how much we start reading Geeta, how much we start getting that Lord and meditating that Lord, we start being happy automatically. How it happens? Because if there is bulb, if there is light, I will go near to the light, I will be shining. That light will reflect on my face. The same principle applies here. The Lord is Satchidananda Swarupa. How much I go near to that, that happiness will be reflecting in me. I will be happy. So ultimately, I want happiness only. So try to get that unbreakable happiness. By that kshanik, that momental happiness, that will be destroyed. But this is not going to destroy. So here Arjuna just put his doubt, that I am having that doubt, that which way is better? Who's the better knower of the yoga? The Saguna Sakar, Bhakta, or the Nirguna Nirakar devotee? What is best? Manifest worshipping or unmanifest worshipping? So, Lord Krishna now going to speak. For long this was awaited and we were wishing what Krishna ji will say here, because he explained both the ways. So in second shloka, he is telling, Śrī-Bhagavānuvaca Mayyāveshya mano ye man nitya yukta upasate Shraddhaya parayopetāste me yukta tamamataha. The Lord is telling here, Mai aveshya mano ye man nitya yukta upasate. The Lord said, those who ever integrated with me and possessed of supreme faith, Mai aveshya mano ye man nitya yukta upasate. Mai aveshya. Aveshya is the word of avishta. Avishta means fixing. So Mai aveshya, Mai means into me. So Lord is telling, who has fixed their mind into me and they are possessed with supreme faith. Mai aveshya manoya nitya yukta upasate. They are just worshiping me with supreme faith. Mai aveshya manoye man nitya yukta upasate. Upasate means worshipping, and nitya yukta ever integrated. They are always connected, always worshipping that Lord. Not every time in 24 hours I'm how much I can. That will be done by me only. So nitya yukta upasate. Shraddhaya, with faith.
Not I'm sitting there and I'm just worshipping the Lord because my mother told me and I'm worshipping. I don't have any feeling for the Lord, but yeah, I'm told to do this. That is also good. You don't think that that is not good. That is also good. Doing something is better than nothing. I will be doing that. After some time, the bhakti will start coming into me. If I don't get that feel for the Lord, but still I am told to sit and do worshipping, yes, it's totally good. It's totally fine. Because when we will be sitting there, we will be seeing that Swarupa, we will be getting that happy. We can just experience that. So that is also good. But Nitya Yukta Upasate Shraddhaya, having that faith. These are the Bhakta Lakshanas. Who's Bhakta? Who's having Shraddha? Shraddhaya Parayoho. Petaha. Paraya, with Paraya Shraddha, with supreme faith. Shraddhaya Parayo Petaha. Taha. Te me Yukta Tamamataha. They are always integrated with me, Krishna. These are considered by me. And highest among the yogins means these are the better knower of the yoga. Te me yuktatama mataha yuktatama. He told they are the best yogis. Now, Lord explained from first chapter till 10th chapter the Akshara Brahma Sarupa, that unmanifest Lord. Now he is telling the best is Saguna Sakara Bhakti, the manifest Lord worshipping. What is this? How he is telling that? So we'll just take one example. If I ask some children to just calculate 3 plus 3, okay. If I ask some elder person, okay, they will be calculating, yeah, 3, 3, 6, 6. Very easy, okay. Some children who just have started studying, one will be counting with fingers, 1, 2, 3, then again 1, 2, 3, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. We will count with fingers. One person will be taking pen and putting that lines 1, 2, 3, 1, 2, 3, total cutting 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 lines. Total is 6. One person will be taking abacus. One person will be taking calculator to calculate that. And one person will be taking laptop or phone or anything. That doesn't matter. What is best for them? I can't say that fingers are best for you or pen is best for you or you can just do abacus and you can just use your mind. No. It depends on what is for them. Where they are comfortable, what is easy for them. What is easy and where they are comfortable. They can easily do that. That is the best for them. So Lord also told here, this is Saguna Sakara Bhakti. Why? Not because it is giving more fruits, but Lord is so merciful. He always take care of us. He is saying this is best because this is easy. If we want to do this, we can do this easily. But if you want to do that manifest worship, that will be difficult for us. Lord will tell him for the shlokas. So he is telling, this is easy, that's why this is good. So now what about the Nirguna Nirakara Bhaktas? Because this is possible, that's why this was described. And now what about them if it is easy and it is best? And so everyone will start doing this only. What about them who are worshipping that Akshara Avyakta Brahma? Telling, wait, you just listen, I'm going to tell you. So from third shloka, he is going to explain those people. Yes. Ye tvaksharamanirdesyam avyaktam paryupasate sarvatra gamachintyancha kutastamachalan dhruvam. Here, the Lord is explaining that Akshara Swarupa. Ye tu Aksharam. Now, to whom we should call the Nirguna Nirakara. So, he is telling some characteristics. Aksharam, which Akshara means which is always
decreasing. That is Akshara, and which will never be destroyed. That is Akshara. So ye to Aksharam, Akshara Brahma. Second is Anirdeshyam. Anirdeshyam means indicating something. Anirdeshyam means I can't indicate that. I can't show that. If someone asks that who is Brahman, who is Nirguna Nirakara Brahma, what is this Nirguna Nirakara Brahma? So how I will tell them? No, I can't tell. I can't tell them that Brahman is like this, Brahman is like this. If someone asks that how is this that book, Panchapadika book or any book, so I will just show them that cover looks like similar to this book. That will be having this heavy book and red color. So I will be indicating something. But if I want to tell how is the Brahman, I can't. Anirdeshyam, I can't indicate about that. Anirdeshyam. Avyaktam. In Upanishads, there is one definition for Avyaktam. Avyakta means which is not visible. I can't describe it. Vyakta is I can describe it. My watch is visible, my badge is visible, my specs are visible. So everything is visible. So this is Vyakta. But Avyakta, which is not visible, I can't describe that. Avyaktam. So in Upanishads, there is one definition. Yat chakshusha na pashyati, yena chakshumshi pashyati, tadeva brahmatvam vidhi, nedam yadidam upasate. Yat chakshusha na pashyati, that can't be seen through our eyes. But yena chakshumshi pashyati, but our eyes get the power from that only to see everything. My ear is getting power from that Brahman to hear everything, to listen everything. My eyes are getting power. My body is getting, everything is getting that power from that Nirguna Nirakara only, that unmanifest, that Almighty. So I can't describe it. Yet chakshusha na pasya, that can't be seen, but my eyes get power to see everything from that only. Yena chakshumshi pashyati. Tadeva brahmatvam vidhi. You understand? That is only Brahma. Nedam yadidam upasati. So that is Brahma. Definition there. Nirguna Nirakara Brahma. So avyaktam pariupasati. Sarvatra gamachintyancha kutasthamachalendruvam. Sarvatra gama. That is omnipresent. That is everywhere. If anyone asks, where is the sky? So sky is everywhere. Because sky is just nearest to the Brahman. I will tell this hierarchy also and these sequences also in further explanation sessions of this Geeta. That will be discussed later also. So I am not going so deep because that will make some difficulty to understand everything. So we will be taking Upanishads and we will be taking Geeta, all the meanings. So we will be making it easy and we will be going in these steps further. So this is Sarvatragama. This is omnipresent. This is present everywhere in each kana. When Hiranyakashipu asked, your Lord is in this pillar also? Yes. Prahlad said, yes, he is. Okay. So he took his gada and he just put over there. Oh, Narsingha Bhagavan came there. Narsingha Bhagavan ki jai. So Lord is everywhere, in each kana, in each point. Lord is everywhere. Sarvatra gama. Achintyam. We all know this fact that we can just imagine the things we have seen before. Whatever we dream, whatever we just imagine, we must have seen that before. So that is chintyam. Chintanam means thinking of something. So we can only think of something when we have seen that before also. But Brahma is achintyam because we never have seen him. Seen this Brahman.
We never seen that Almighty. We never seen that Supreme Lord. So that is achintyam. We can't think of that, how it looks like. If you want to meditate, do meditation of that Nirguna Nirakara, so everyone will just suggest you don't see anything. You keep focusing on that blank, shunya, nothing. So that is Nirguna Nirakara. So that is nothing. Achintyam, Kutastham. In our scriptures, Kut word is famous for Maya also. So Kutastha means the Adhisthana, the cause of that Maya. Maya is because of that Maya only we are able to see everything. This everything is visible, everything, this Prapancha is there. The Advaita Vedanta Siddhanta is Brahma Satyam Jagan Mithya. So, only Brahma is Satya and Jagan Mithya. This is just illusion created by that Maya. And Maya is the power of that Brahma. So that's why that Kutastha, the Adhisthana of that Maya. And one more meaning is never changeable. Kutastha, never changeable. Not having any part, not having any side, just stable. Achalam, immovable. This doesn't move because this is Sarvatragama. This is present everywhere. So if I am everywhere, I am here. So I can just walk 2 steps and I can just change my place. But Brahma is everywhere. How it can go from one place to another? It can't go. That's why Achalam, Dhruvam, eternal. Because it is everywhere, it is Achalam, that's why it is Dhruvam, eternal. It will be, it was there, it is here, it will be there. Eternal. Now, 4th shloka is connected to this only. But 4th shloka is very beautiful. Let's see that. Sanniyam yendriya gramam sarvatra samabuddhayaha te prapnuvanti mameva sarvabhuta hite rataha. Sanniyam, here the quality of told of that person, that Jnana Yogi. And also the shloka is very famous and this is also referred for volunteers. Whoever is volunteering, whoever want to serve. So many things are told here. Let's discuss one by one. 4th shloka. So here in 1st quarter, there are 4 quarters in one shloka. 1st, 2nd, 3rd and 4th. So in 1st quarter, Sanniyam Mendriya Gramam. This is Achara Samhita. How we should live. 2nd quarter is telling us our drishtikon, our vision. Sarvatra samabuddhayaha. 4th is Sarvabhuta hite rataha. This is what we need to do. Sarvabhuta hite rataha, the welfare of everyone. And 3rd quarter, te prapnuvanti mameva. Here the phala is told, the fruit of that. So, te prapnuvanti mameva, they will get me only. Lord is telling. So, first is Achara Samhita, 2nd is the Drishtikona, the vision, and 3rd is the Kar, what we should do, what the work we should do, and the 3rd quarter is indicating that phala, what is the fruit of this. So, Sanniyam Mendriya Gramam, it means having restraint all over our senses, all the indriyas, our eyes, these are the Jnana Indriyas, the senses of knowledge, the eyes, the ear, the skin, this jiva, this tongue, these are the senses of knowledge, this nose, these are the senses of knowledge. And there are senses of action also, this mouth, hand, leg, genitals and rectums. So these are the 10 indriyas, these are the 10 sense objects. So here is saying Sanniyam Indriya Gramam. Indriya means one indriya, eyes or ear, anything we can refer. But Indriya Gramam, Gramam means that group. So in Sanniyam Indriya Gramam, having control over all these indriyas,
Sanniyam, not only niyam means controlling over, but sanniyaman means very well controlled. Not this time I will control, next time I will not control, next time I will try, after 1 hour I will again continue, right now I want to eat jalebi, I will not continue. No, not sanniyam mendriya. This is our living should be. So sanniyam mendriya gramam, controlling all over the indriyas. Sarvatra samabuddhaya, having everywhere equal eye. There is no jat path, there is no bhed bhava, there is no partiality. Sarvatra samabuddhaya. But be careful. There is one concept in our scriptures. Samavartana, samadarshana. Samadarshana means seeing everyone equal. Samavartana means not just behaving same with everyone. You see, with dog, we can have sarvatra samabuddhaya. I can see, yes, he is also having that self only. He is also having that Lord in his heart only. So he is also that jiva, that being only, living being only. So I will be having that drishti. Yes, I should have karuna daya for him. But I can't do samavartana with him. I can't call him to sit and eat in my plate. That is samavartana. Okay, you come and eat with me. Okay, you are my lovable dog. No, this is samavartana. Samavartana is not important. Samavartana should not be done. Samadarshana should be done. I will be seeing everyone equal. This is Shastra Viruddha. If you call one dog and come eat with me. No. This is samavartana. Be careful here. So sarvatra samabuddhaya. Te prapnuvan. They will get me only. Who are doing the welfare of everyone, sarva bhuta hiterataha, who are always busy in the welfare of everyone. Sarva bhuta hiterataha, welfare of everyone. Here it is told, yes. So let's see the 5th shloka. We need to go a little faster. Now in 5th shloka, Lord told why I told in 2nd shloka briefly that yes, this is good. So let's see. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. Here he told क्लेशः अधिकतरमस्ति तेषाम्, whose klesha means the struggle will be more for them who are worshipping the unmanifest Lord. क्लेशो अधिकतरमस्ति तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम्, who are worshipping that avyakta Brahma, who are worshipping the avyakta Brahma, the klesha, the struggle is more for them. Yes. Avyakta hi gatir dukkham, avyakta sakta-chetasam. The trouble is more for them. Tesham avyakta sak, whose minds are set in the unmanifest, who are always thinking of that unmanifest, who are just meditating that unmanifest. The klesha adhikataramasthesham. Avyakta sakta. Avyakta asakta chetasam. Asakta chetasam means the mind is fixed in avyakta. Avyakta asakta chetasam. Avyakta hi gatihi dukkham. That unmanifested is that goal is for pain, and that is difficult by getting dehavadhi avapyate. Avapyate means attaining that. So this reaching that unmanifest is difficult for dehavadhi, for these embodies like us. This is difficult to get that. That's why Lord told in brief that getting that the saguna sakara bhakti is easier than the nirguna sakara bhakti. So that was easy because of that was best because that is easy, not because this is giving more fruits. Now from the 6th shloka, Arjuna is telling this is difficult. Saguna sakara is also difficult. Fixing, always thinking of Lord, meditating that saguna sakara bhakti with all the ways I am worshipping that of Brahman only. That is also difficult. So here Arjuna told, Arjuna was having some confusion on how to do this. So Krishna ji just observed that actually Arjuna will do whatever Krishna says. This is Geeta is for us, not for Arjuna. Arjuna is
a devotee of Lord Krishna. He accepted Krishna, weaponless Krishna, not the army Narayani Sena. So Arjuna is a devotee of Lord Krishna. Whatever Krishna says, he will do that. But Krishna wanted to tell Geeta for us. That's why everything is just we are imagining. Arjuna is having that confusion. Now Lord is going to clarify, and he is going to give so many ways to us about this. Let's see 6th shloka. Ye tu sarvani karmani mai sanyasya matpara ananye naiva yogena mandhyayanta upasate. Ye tu sarvani karmani mai sanyasya matparaha. The Lord is telling, for those who dedicate all the actions to me and hold me as their supreme self. Ye tu sarvani karmani mai sanyasya matparaha. They dedicate all the actions to me and matparaha. They hold me as their supreme self. Ananyena iva yogena. With ananya yoga, O Lord, there is no one other than you for me. You are only. Mere to girdhar gopal dusaro na koi. So only Girdhar Gopal is mine. So Lord, other than you, there is no one for me. This is Ananya Yoga. Ananyena iva yogena mandhyayanta upasate. Lord is telling. So, ye tu sarvani karmani, who just dedicate all the karmas to me, and matparaha, behold me as your supreme self. Only I am the supreme for them. Ananyena iva yogena, oh Lord is only for me. Ananya yoga, I will be worshipping that Lord. Mandhyayantu upasate. And Ananya yogi should be careful that if I am worshipping any other Lord also, there is no problem. But still, whenever we worship that, we should have the image of our Lord. We can have our image, but we should not say, okay, no, my is Shankarji, I can't pray Vishnuji. No, not like this. Worshipping Vishnuji is also thinking that, yes, Shankar is there. Worshipping Shankar. Thinking that is the Ananya Yoga. Ananyena imam dhyayanta upasate. They just meditating on me with the exclusive devotion. Man dhyayanta upasate ananya yogena. This is exclusive devotion. This was one way. You just dedicate all the karmas into me. Looking so easy, but Arjuna is still confused. It is because this is not easy doing anything, and I will just say, okay, Lord, I'm just dedicating this to you. No, not easy. So let's see 7th shloka. Lord is given, okay, you wait. What will happen if you just dedicate all the karmas into me? Teshamaham samudharta mrityu samsara sagaran bhavami nachirat partha maya veshita chetasam. To those whose minds are set into me, Teshamaham. My aveshita chetasam. First we need to understand this meaning. My aveshita chetasam, whose chetasam means that mind, whose minds are connected into me, integrated in with me. Tesham. For them, what I do? Samudharta. I just make them to cross this ocean of samsara, the ocean of birth and death. I make them to pass this. Bhavamina chirat partha. I just make them to pass this ocean of samsara. I become that the person, and I will take them in my boat, and I will make them to pass this river, pass this ocean. Lord is telling, if you dedicate all the karmas, but okay, difficult. Now Arjuna is still confused. This is so tough. Krishna ji is telling another option. Mayeva manadhatsva may buddhin niveshaya nivasishyasi mayeva ataurdhanna samshayaha. Okay, may aveshya manoyamam. Whatever we think with the buddhi. Whatever if we love anyone, we love with that mana, with that mind. So Lord is telling, whatever you think only me. If you want to love someone, you love only me. That's why he's telling mana and buddhi both. Mayeva mana datsva may buddhin niveshaya nivasishyasi mayeva ataurdhanna samshaya. There is no doubt, Arjuna.
If you just dedicate all, you just fix your mind and your buddhi both into me. If you fix both mind and buddhi, your intellect, if you set your mind, then nivasishyasi mayyevat urdham na samshayaha. They will get me only. There is no doubt, Arjuna. No doubt. They will be living in me. They will be dwelling in myself alone. Nivasishyasi mayyeva. They will be alone dwelling in myself. There is no doubt. So Lord given one more option. If you can just dedicate all the karmas. If you can't do that, okay, you just fix your mind and your buddhi into me. Where that is not possible, Lord will give so many options, many more options, but that we will see in the next session from 9th shloka, because we are running out of time. So we have seen these 8 shlokas. Just practice and try to understand how Lord Krishna is giving these answers to Arjuna, trying to make him ready for the yuddha, for this war. Okay, be ready, get out of that depression and leave that everything. So Lord is telling these options. So we have seen so many options. There are many more that will be taken in next session. So we will join in next session and we will see the further shlokas of this 12th chapter. By the time, just keep our mind calm and we will do 2 minutes Nama Sankirtana. Hari Sharanam, 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 Hari Sharanam. Gopala Krishna Bhagavan ki Jai. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Didi, that was a fantastic session. And you dealt in detail who is the best bhakta, the one who worships manifest Lord or who worships unmanifest Lord, as asked by Arjuna, and the answer Sri Krishna gave. We would be seeing more of this in coming sessions. Now it is time for question and answers. I request those who want to ask questions to raise their hands. Didi, can you hear me? Yeah, Malaji, I can hear you. Okay, thank you. Yeah, thank you. We would be seeing more of this, and this is now it is time for question and answers. I request those who want to ask questions to raise their hands and switch on their cameras and wait for their turn. Please make the questions precise so that more questions can be taken. Ashu Bhaiya is joining today, Didi? Yes, within 5 minutes. He is in another session. He will be joining us very soon. Then we can introduce him awesome. and we can invite him. Yeah. So now we can start with the questions, no? You can. Yes, Kumkumji, Over to please you. ask your questions. Yeah. जय कृष्णा जी, जय कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। मैं तो हिंदी में बोल पाऊंगी। हाँ बिल्कुल बोलिए। अरे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। कि जैसे कि मान लिया सुबह की क्लास छूट जाती है, 6 बजे की ज्वाइन करती हूँ मैं, छूट जाती है तो उसको बाद में ले सकते हैं? आप वो क्लास तो नहीं ले सकते क्योंकि हम अपने लर्न गीता प्रोग्राम में सिर्फ एक ही क्लास में रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप में ऑडियोज वीडियोज भेजे जाते हैं, तो आप उन ऑडियोज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो सुवर्णा काकी जी का चला के सुन सकते हैं, और अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो आप अपनी 8-10 बार प्रैक्टिस करके ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, तो आपकी ट्रेनर करेक्ट करके आपको ग्रुप में ही रिप्लाई कर दे। तो इतनी सुविधा हमारे लिए है, लेकिन वो कक्षा दोबारा नहीं मिल सकती। मतलब और किसी टाइम नहीं मिल सकती?
हाँ, वो तो कक्षा गई आज की, फिर कल ही 6 बजे मिलेगी। अच्छा वो मैं कल के लिए सोच रही थी क्योंकि कल एक ज्वाइन। दिन में देखिए लर्न गीता प्रोग्राम में अपने 1000 क्लासेस एक दिन में चल रही हैं। तो 1000 क्लासेस में बहुतों की छूट रही है डेली डेली, बहुत लोग बहुत से काम में हैं। तो उनको बार बार ज्वाइन करना या फिर वो क्लासेस दोबारा रन कराना या फिर कोई भी उसके लिए सुविधा करना हमारे लिए मुश्किल बात है। इसलिए वो क्लासेस एक ही बार होंगी, आप ऑडियो वीडियो से अभ्यास कर सकते हैं। जी दीदी, जी दीदी, ओके ओके दीदी, जय जय श्री कृष्णा। यस, आई डोंट नो, you have joined with the name iPhone. Can you please rename yourself and tell your correct name? Please unmute yourself. You must have got pop-up on your screen. Sending a request to unmute. Yes, you unmuted now. नमस्ते दीदी। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। कहिए। मुझे एक डाउट है कि to get rid of negative thoughts, which sloka we should chant? There are so many. So, which type of negative thought? First, we have to specify that. Any type of thought we have in second chapter further, we will be reading it and we will be getting so many shlokas for that. सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. So we have plenty of shlokas in Bhagavad Gita explained for this. So we just have to do our duty. We don't have any right in our karma phala. So we will not be getting anger. We will not be expecting something for that. So that is not a negative thought for us. And again, sukh dukhe samay kritva labha labho jaya jo, in balancing ourselves, making ourselves equal in all the situations. That is one shloka. Even we are happy, even we are sad, even we are benefited of, even we are in loss, we are equal, we are balanced. So balancing ourselves in every situation of our life. So there are many shlokas. I just remember 2 shlokas right now, so I told you. In level, we have 4 levels in this Learn Gita program. So further we'll be seeing all the shlokas one by one in detail in these interpretation sessions. अच्छा ठीक। Okay. Yes, Meenal ji. जय श्री कृष्ण दीदी। Jai Shri Krishna. Please ask. दीदी ये मेरा पहला है गीता का, मैं पहली बार लाइफ में सीख रही हूँ इसको। और सच कहूँ तो मुझे ये जो भी एक्सप्लेनेशन दिया मुझे कुछ भी ठीक से समझा नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा रेफरेंस के लिए मीनिंग का कुछ ऐसा बुक कैन आई गेट समवेयर फ्रॉम द शॉप और? Yes, you can refer Geeta Press book, Meenal ji. You can order it online also or any book stall of Geeta Press. You will be getting these books, Geeta books. You can refer that for the meaning. And also on learngeeta.com, the reference books are added. So you can go on learngeeta.com in reference books and in Sadhak Sanjeevani or any other translation book of Geeta. The books are uploaded there. So you can refer that PDF or you can order online the original book. I have some of books, but can you give me in a simple way to get the meaning of those? Simplest is Geeta Press. Geeta Press translation, yellow book. Okay. Yes, you can refer that. And Sadhak Sanjeevani also. If after listening this, after understanding a bit more about these shlokas, we can refer Sadhak Sanjeevani to go further lessons, to understand more about that. Sadhak Sanjeevani is also an easiest language. Sadhak Sanjeevani is a book. Yes, Sadhak Sanjeevani is a commentary on Gita by Swami Ram Sukdas Ji Maharaj. He was a saint staying in Rishikesha. He is no more. But yes, that book is very nice. Very, very nice. We also refer for this Vivechana. So you can refer that for your study. It is from Geeta Press, no? Yes, Geeta Press. Yes. Okay. Geeta Press is authentic. That's why we recommend only that. Okay. Yes, Virendra ji. Jai Shri Krishna Didi. Jai Shri Krishna. Didi, I just wanted to understand, like I have been with, reading Gita since 2005, and I had read the books actually right from the beginning and everything in Hindi and English both. And I actually got the first introduction with Brahma Kumaris
then I left for some time. Then I joined ISKCON actually, and then had learned and understood it. But what I am feeling, reading the mantras and reciting them gives us a lot more, enthusiasm and understanding better. So I just wanted to know, like, what we understood from ISKCON and from Geeta Parivar is quite different. And how do we correlate and how do we, form our path, actually, the forward journey, actually. Yeah. I would like to hold your question, Virendra ji, because Ashubha is joining us. I think he would be the best person to answer this question. That's because that is based on experience. I know about this, but the best person is Ashubha. So I'm holding your question. I will be taking you again on this spotlight. Just raise your hand. Keep your hand raised. I will be adding you again. Sure. Thank you. This is actually a very nice question. We all should know about it. Yeah. Thank you. Yes. Yes, Sangeeta Yadav ji, please ask your question. Sangeeta ji, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Jai Shri Yes, Krishna. Sangeeta. Ma'am, actually, there's no electricity in my house. Yeah, Actually, no problem. Please ask. Ma'am, I want to ask, which is more better? Like some says that Bhagavad Gita is more better, and some says that Bhagavad Mahapuran is more better than Bhagavad Yes. Gita. Like it just Yes, you yes. said that Bhagavad Gita is the gist of everything, all Vedas, Upanishad, everything, and Bhagavad Mahapuran is also said to be a gist of everything. So No, which is more Bhagavad better? Mahapuran is having all the leelas. It is based on the Krishna's life, Lord Yes. Krishna's life. But Bhagavad Gita is one part. It is sung by the Lord in that Kurukshetra, the battlefield. So this is different one. This is just the talk between Krishna and Arjuna, and that is completely different. Srimad Bhagavat Mahapuranam, that is based on Krishna's life. So it is having all these stories beginning from the when the Krishna was born and when he died. So all the leelas are there. But in Bhagavad Gita we don't have that. Okay, ma'am. But if we want to, if we are on the spiritual path, if we want to get success, we want to move further on. Gita Then is best for us. yes, Gita is best. thank you, ma'am. Bhagavatam is having 24,000 shlokas. Yes, ma'am. So that when we have Vatsalya Bhava, when we have Sakhya Bhava for Krishna, we Yes. can just, when we have so much interest in Krishna, we want to know about Krishna more, then Yes, we should refer that Bhagavad Purana. Mm. But when we want something for our life, how Bhagavad Gita can help us, how to live. The Bhagavad Gita is management of Shastra of management. So when Yes. we want these things, when we want our choices, when we want to understand Gita on our choice, so we should refer this Gita. That Bhagavad Puranam is not for us now. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. उज्ज्वला जी, हाँ, मैं पहली बार, क्योंकि मेरे फैमिली में तो कोई ऐसा प्रार्थना वगैरह करते हैं, मगर मुझे बहुत सारे दोस्त ने बोला कि गीता का करो, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज थी है, तो बोले कि तुम्हारे गीता सीखो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। बहुत सारे नहीं, सारे। हाँ, तो फिर ये ना मुझे यानी कि मेरा जो ये है ना बोलने का तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है। मैं मेरे भाई के इधर हुआ अभी अब्रॉड में, तो उसने वो रिकॉर्ड सुना तो बोला कि तुझे तो आता है, तो तू इसमें कंटिन्यू कर। तो ये 2 अध्याय होने के बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना पूरी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी गीता परिवार में तो हमारी परीक्षा भी कंपलसरी नहीं होती। आप एग्जाम नहीं भी देंगे तो आप लेवल 2 में जा सकते हैं, 2 का नहीं दिया तो भी 3 में जा सकते हैं, 3 का नहीं दिया तो भी 4 में जा सकते हैं। हमारा तो सिर्फ उद्देश्य एक है, गीता पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, जीवन में लाते रहें। भगवान का प्रिय कार्य है गीता पढ़ना पढ़ाना, हम सब भगवान की प्रिय सूची में बने रहें, इतना ही हमारा ध्येय है। मुझे पहले बार लगता है कि ऐसे नहीं हो पाएगा, डर लगता है, मगर आज रिकॉर्डिंग भेजे तो लगता है कि हो जाएगा, हो सकता है। बोल बोल के कॉन्फिडेंस आता है ना, जल्दी आ जाएगा। बढ़िया बोलेंगे।
जब मैंने भी गीता सीखना आरंभ किया था, when I started learning Gita, I read this 12th chapter 20th shloka in Antyakshari competition. Very wrong. One student, other student told me, what you are singing, how you are chanting this shloka, this is so wrong. Because I have not read that properly. Then I started, no, I can't chant the shloka like this much wrong. So then I started learning until 8th class. I have completed my Gita. Learning Gita, I memorized all the shlokas. Then I started working on this meanings. Yes, Lataji, please ask your question. नमस्ते। जय श्री कृष्ण। Please say. जय कृष्ण। मैं कर्नाटक से लता। हमारे जीवन में जो मुश्किल आते हैं, जो काम नहीं चलते, जो बिजनेस नहीं होते, तब हमें एक श्लोक का बताने और तब टाइम में उस टाइम में जो कोई श्लोक बताना है तो कौन सा बताना चाहिए? बिजनेस काम नहीं कर रहा है, आप ये कह रही हैं? हाँ, फैमिली भी अच्छी नहीं है। सो हमें हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, तो गीता पढ़ो, उसमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, ऐसा बोलते रहते हैं। मैंने अभी 2 श्लोक बताया, वही 2 श्लोक बिल्कुल ठीक यहाँ पे फिट बैठते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारः ते। भगवान इज टेलिंग हियर, आपका अधिकार सिर्फ कर्म में है। He is not telling that is not the meaning you should be doing karma only and you should not think about that phala. No, that is not the meaning कि हम आपको सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये इसका कभी नहीं है जो हमको लिख के बार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉरवर्ड हो रहा है कि फल की चिंता मत करो। चिंता करने की बात ही नहीं। भगवान कहते हैं आप कर्म, आपका अधिकार कर्म में, आपका अधिकार फल में है ही नहीं। भगवान अधिकार कहते हैं, तो चिंता तो बात अलग हो गई कि मेरा अधिकार है लेकिन हम चिंता नहीं करेंगे। नहीं, आपका अधिकार ही नहीं है जी। हम इस धरती पर आए हैं, हम मंच पे जा रहे हैं अपना रोल प्ले करने के लिए, बस उतना ही हमारा काम है। उसके अतिरिक्त उन भावों से अटैच हो जाएंगे, हम वही अपने आप को कैरेक्टर समझने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारा सिर्फ कर्म में अधिकार है। तो बिजनेस हमने अपना 100% लगा दिया, फिर बिजनेस नहीं चला तो नहीं चला। फैमिली से कनेक्ट होते हैं ना, तो बिजनेस चलती तो घर चलते हैं। तो इसलिए दुख भी आए तो यही सोचना चाहिए, भगवान ने कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसा भगवान ने कहा। तो सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में, जय में, पराजय में हमेशा सम हो जाओ। तो भगवान ने सम होने की बात कही है, तो हम लोग भी उसी का प्रयास करेंगे। हम कर्नाटक से ना, वो सब कन्नड़ा अक्षर में है, संस्कृत को हम पढ़ने के लिए कितना कोशिश करते हैं, वो स्पीच नहीं आते, वो टोन नहीं आती है। साउथ इंडिया की एक्चुअली टोन थोड़ी सी नॉर्थ इंडिया से डिफर कर जाती है ना। हमको आपके साउथ इंडिया, हमको तो साउथ इंडिया की टोन, मैं 4 साल से साउथ में ही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक साउथ की टोन नहीं बैठी। मैं केरल में हूँ लेकिन मैं टोन बैठा नहीं पाई। मैं आज भी नॉर्थ की टोन से श्लोक गाती हूँ अपने। आप तो बहुत अच्छी गाते हैं। हमें एक ही श्लोक बोलते हैं ना, वो सभी लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि ये क्या बोल रही हो, चुप हो जाओ। अरे बोलने दीजिए, गीता गाने का आनंद दूसरे थोड़े लेंगे, गीता गाने का आनंद तो हमें लेना है। थैंक यू। गीता गाते रहिए, आनंद लेते रहिए। वेरी नाइस, बढ़िया जी। कृष्णा भट्टर जी, पूछिए। जय श्री कृष्ण। I think I will be comfortable in our mother tongue. Can I? Which language is your mother tongue? Of course, we are in Hindustan. Hindi is our mother tongue. Yes. Actually, in the era of intellectuals, they call their mother tongue as their state tongue. What they are speaking, that Kannada, Malayalam, like this. So that's why I asked mother tongue. नहीं, उसका कारण है कि हम स्वयं को हिंदू या हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। मलयालम मानते हैं कि बंगाली मानते हैं कि मराठी मानते हैं। सही बात। तो हमारी मदर टंग चेंज हो जाती है। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न हमारा देखिए, ऐसे 2 प्रश्न है मुख्य। मेरा प्रश्न तो और भी कई है, पूछने 2 ही है, तो मैं दोनों प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे। पहला प्रश्न है मेरा कि इसकी श्लोक वाइज समीक्षा, अर्थ, शब्दार्थ कब और कैसे शुरू होगा? नहीं, कैसे, मैं समझी नहीं। आज हम लोगों ने 8 श्लोक देख लिए
हमने पूरे हफ्ते में 10 श्लोक सीखे हैं अपनी कक्षाओं में, और 8 श्लोकों का अर्थ हमने इस बार देख लिया है। और अगले सप्ताह तक हमारा 12वां अध्याय चारण के साथ भी क्लासेस में खत्म हो जाएगा, और अर्थ विवेचन में भी पूरे 20 श्लोक हो जाएंगे। तो जैसे जैसे जितने जितने श्लोक हम सीखते जाएंगे, उतने उतने श्लोकों का अर्थ देखते जाएंगे। उसमें अगर कुछ मेरे को न समझ में आए या छूट जाए, और ये आपका YouTube लाइव हो रहा है, तो इस विवेचन को आप लोग दोबारा भी YouTube पे जाके सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन लीजिए कि जो मैसेज कृष्ण अर्जुन को, पार्थ को दे रहे हैं कि सकाम भाव या निष्काम भाव, किसी भी भाव से तुम मुझको भजोगे तो तुमको प्राप्त होगे, राइट? वो नहीं, मैं आपकी बात सुन नहीं पाई कृष्णा जी, प्लीज रिपीट करें। इसमें कृष्णा ने मैसेज दिया है पार्थ को कि जीव मुझे सकाम भाव या निष्काम भाव, किसी भी भाव से मुझे भजे तो मुझे प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है, ही बात है। तो ये सकाम भाव क्या है और निष्काम भाव क्या है? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो तो सकाम भाव हो जाता है, और हम निष्काम भाव से कर्म करते रहे। अभी मैं चाहूंगी कि इसका उत्तर आशु भैया दें कि सकाम निष्काम को, अभी तक मैं उन चैप्टर्स पे पहुंची नहीं हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, तो ये अभी आशु भैया ज्यादा अच्छे से बतला पाएंगे, क्योंकि मेरा उतना अनुभव नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बतलाती हूँ, तो आशु भैया अच्छे से बतलाएंगे इसको। आशु भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो ज्वाइन करेंगे तो उनसे पूछिएगा। जी, थैंक यू जी। अपूर्वा जी, कांति चौधरी जी पूछिए। Good evening, Jai Krishna. Can I speak in Bengali? No, I would not be understanding that language. I can just understand Hindi, English and Sanskrit. ठीक है। जो ट्रांसलेशन के लिए हम पूछता है, ट्रांसलेशन बंगाली में जो बुक है ना, वो कहाँ से लेगा, कहाँ मिलेगा? हम कोलकाता में रहता है, तो कोलकाता से कहाँ गीता प्रेस है जिसको हम वहाँ पर कर ले सकते हैं? और ऑनलाइन का बारे में तो जो ऑनलाइन में आप गीता प्रेस पे जाइए, और गीता प्रेस पे जाके आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और कोलकाता में नहीं है कि गीता का? कोलकाता में नहीं है? कलकत्ता में? कोलकाता में है ना, अरे कोलकाता में तो बिल्कुल है। काफी स्टेशंस पे हमको गीता प्रेस के बुक स्टॉल्स मिल जाते हैं, तो हम वहाँ पे अपना ले सकते हैं, वहाँ से भी बुक ले सकते हैं। कॉलेज स्ट्रीट में है, तो कॉलेज स्ट्रीट में, कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट में। जी जी जी, कोलकाता में है, इतना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं श्योर हूँ इस बारे में, लेकिन कहाँ है ये आपको एक बार गूगल सर्च करके पता लगा लेना चाहिए। ठीक है, वो गीता प्रेस में हम वही ट्रांसलेशन के लिए हम जरूरत था, तो उसके लिए हम बताया था। अच्छा चल रहा है, श्लोक जो उच्चारण हो रहा है तो अच्छा ही लगता है, तो मेरा ध्यान आता है कि श्लोक और ज्यादा सीखेंगा। 10 श्लोक में सीखा है। धीरे धीरे सीखते जाएंगे, इस पथ पे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरी गीता तो अपनी हो ही जाएगी, और उसके बाद दोबारा से अपना चक्र आरंभ कर देंगे। गीता को सीखते रहेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे, बस ऐसे ही गीता जी का चलता रहेगा। ठीक है, नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन आप गीता परिवार की साइट पे जाकर के कहीं से भी गीता ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन गीता प्रेस की करेंगे तो सबसे आसान भाषा में हमारे लिए ही होते हैं, सबसे ऑथेंटिक है, तो उसमें भूल होने की संभावना लगभग शून्य होती है। जी, वेद जी पूछिए। यस प्लीज आस्क। जय श्री कृष्ण। यस प्लीज आस्क। वेद जी प्लीज आस्क। यस, अभी तक आपने जो आज बोला वो सारा मुझे समझ में आया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बोला। क्या बात पर है। अभी मुझे प्रश्न ऐसा है कि अगर 12वें अध्याय में कुछ कुछ शब्द ऐसे भी है जो मुझे मतलब बोलने के लिए कठिन जा रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस तो मैं रोज करता ही हूँ, उसके अलावा कुछ और सुझाव दे सकते हो आप? भगवान ने सुझाव दे दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान ने जब अभ्यास की बात कह दी तो मैं उसके अतिरिक्त आपको क्या उपाय बतलाऊं? सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, अधिक से अधिक बस आपको जो वीडियो भेजा गया है उसको सुनते रहिए,
अधिक आप जब संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत का ऐसा मैकेनिज्म है कि हम उसको जितना जोर से बोलते हैं और वो अपने आप को ही सुनाई देती है, तो उतनी जल्दी वो याद होती है, और जितना जोर से बोलते हैं उतना स्पष्ट होती है हमारी भाषा। तो आप जब श्लोकों को बोले तो उसको थोड़ा जोर से पढ़ने का अभ्यास करें, थोड़ा आवाज तेज करके, चिल्लाना नहीं है लेकिन थोड़ी सी जोर से आवाज करके, तो उतनी स्पष्टता आती जाएगी। और कभी भी बड़े शब्द हो या टफ हो तो उनको तोड़ तोड़ के, आप पहले श्लोक में ही देखे ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, तो ये मुश्किल आ जाती है, लेकिन ये चाप यक्षरम अव्यक्तम 4 बार में तोड़ लिया तो शब्द पूरा हो जाता है, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। 5वां श्लोक आता है क्लेशोधिकतरस्तेषाम, उसको भी तोड़ तोड़ के पढ़ लें। तो जब भी बड़ा शब्द आए तो आप उसको 4-5 विभाग कर लें और वैसे पढ़ें बिना पॉज दिए, तो अच्छा होता है। ठीक है, जरूर जरूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बढ़िया। अरे इतने छोटे होकर आपको गीता जी समझने आने लगेगी तो कितनी बढ़िया बात है। ललिता जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ललिता जी, कैन यू हियर मी? ललिता जी, कैन यू हियर मी? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हम ये कह रही थी कि जैसे संस्कृत पढ़ते हैं तो ज्यादा लंबा शब्द होता है तो मुख आदि में तो वो पढ़ने में आ जाता है, लेकिन अक्षर थोड़ा एक दो मिक्स होते हैं तो वो पहचानने में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे अच्छा, जब आप जैसे दा और भा जुड़े हुए लिखे होते हैं, या फिर एक शाम, हाँ, जब जुड़े हुए ऐसे अक्षर लिखे हो तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, वो धीरे धीरे अभ्यास से ही आता रहता है, हमको पता लगने लग जाता है यहाँ पे जोड़ा अक्षर है, यहाँ पे हमारा संयुक्त अक्षर आ रहा है, तो वहां पे हम अभ्यास से अपना कर सकते हैं वो, लेकिन अभ्यास से आ जाएगा, पता लगने लग जाएगा ये शब्द कैसे जुड़े। अभी ग्रामर की क्लास भी होगी तो उसमें अपना ये प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मुंह से बोलते हैं ना, आप बोले कि मेरे बच्चे कोई बोले तो मुंह पे थोड़ा आ जाता है बोलने में आसानी से, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है। धीरे धीरे पहले पढ़ना सीख ले, पहले बोलना सीख ले, उसके बाद पढ़ने लग जाए तो भी हो जाएगा। जी, जय श्री कृष्णा। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आशु भैया, डॉक्टर आशु गोयल जी। He is Vice President of Geeta Parivar. He is my mentor also and Program Director of this Learn Geeta. He is so busy all the time, but he is getting some time for us and he is joining our session. Ashu Bhaiya, we welcome you. We have folded 2 questions for you. And now I would request Virendra ji to please ask a question. Virendra ji. Please unmute yourself, Virendra ji. जय श्री कृष्णा आशु भाई। सर मेरा क्वेश्चंस है लाइक 2 parts एक्चुअली। वन इज मैंने like I did my Brahma Kumari's courses. I started with that, and then I left it actually because it was like a different atmosphere altogether. And then I joined ISKCON. ISKCON. I worked like I read Hindi Geeta also and English Geeta also, and I like very much. But since I have joined in this first course, and now I am reciting the mantras, I am getting much more confidence and good feeling actually, and I really appreciate how you are doing. Now I just wanted to understand what should be my way forward actually, to attain the best knowledge as such, and like that. Yes, this is the correct way you are going on by researching yourself and experiencing yourself the knowledge. It is the correct way, and on this path when you will go forward, someday you'll find a Sadguru, and then your path will be ultimate clear. Till then you have to make some efforts like you are doing right now. Keep it up same way you are doing. There is no issues until you hunt for something. You cannot get that. If I am sick, I hunt for a doctor. If I am more sick, then I hunt for a more doctor, and I hunt it more precisely. So that has to be done. Whenever I am seeking something patient with some passion, we get it. But for that passion, we have to give so many inputs. So that's what we need to do. So you are doing the right thing.
You have already escaped from one thing, Brahma Kumari, you already told. So you have already escaped from that. Yes. Some 8 years back. Yeah. I was also there in 1990 and 91 when I was only 11-year-old. So I gone there 2 years. I know what you have experienced. So it is all fine. You are going on the right path. Geeta Parivar doesn't insist anyone to be here only. We don't have any that propaganda or any project like that, that you have to follow my guru or you have to follow Geeta Parivar policies or something. We are just simply teaching Geeta recitation, and you can follow whatever you wish to do. You can follow any institution, you can follow any guru, you can follow any way of bhakti you want. That is completely your freedom and your destiny. We don't interfere. Yes, thank you so much, sir. One more question, actually. I have 2 kids. One is 10 years and another is 6 years, girl child. And what I feel is like they are a bit of attention deficit, actually, and concentration wise. The second thing is like how we can improve like the concentration and attention. And secondly, behavioral aspect, actually, in terms of like they are sometimes aggressive, because of the I got your question. I'll tell you the solution for the whole. You are asking for one thing, and I'll tell you solution for 1,000 things. Yes. We can, and you should, and you can share a story on your dinner table every day. That is the best way. Buy Geeta Press books and read the story of ancient characters, and like Veer Balak, Veer Balikaएं, Bhakta Balak, Bhakta Balikaएं, and there are so many. Chokhi Kahaniya. There are so many storybooks from Geeta Press. Okay. Not only Geeta Press, you can buy other also. Geeta Press is very good one, so you can start with that, and you can follow others also if that is presenting that. You can also have some biographies of saints, biographies of great patriotic peoples, and some everything. One story a day, and it will change all the atmosphere within 3 months of your kids' brain programming. It will completely change the brain programming. All the attention and everything you are seeking of, it will utterly, because listening to those stories and listening to those characters, it is not possible that that child will not start connecting himself with that character, and that is the start. When you start joining yourself with some character, you are building that character inside you. So that happens. That happens. Thank you, sir. Thank you very much. Arunji. I'm going to give you a slight background of myself. I left India when I was 10 years old. I never went to school in learning Hindi or any written language. So I can still speak Hindi, but I have no idea how to read it. Any texts, because even the train stations, when it says platform number 6, I would just count number of platforms and I end up in the wrong place completely. I wasn't a very religious person. I don't go to mandirs, etc. But I do meditation routinely twice a day. I do Tai Chi, and starting at 4:30 in the morning, and I have done that all my life. I get up at 4:30. Very nice. And so I say I am very spiritual, and spiritual to me is Krishna. So that is where I'm at. I'm attending Swami Chinmayananda and go there. Chinmayananda. Yes, sir. Okay, fine. And I do volunteer work. Seva karne se kuch na kuch to milega hi. Kuch purna karna hai, helping the poor or delivering food or cooking or whatever hands can do. Now, I got it all. Now, what is your question? My question is primarily, I would love, because I know the sound of the
mantras are so nice in your head that it is just so calming. I can't do that. The whole week, I can't even get past the first mantra. I understand. And it is so frustrating that I wish I could, and I'm trying to get my wife is going to try and help me to try to learn some. There was a script so that I can at least read. I'm not too sure whether. Are you reading it in Devanagari or Roman? I am trying to read in Roman, but it doesn't make any sense. No, it very makes all the hard sense. for me to. It makes all the sense. Now I got all your point. I understand your actual status and everything, Arunji. And you can have trust over me that just don't make any haste, go slowly, and you will start catching it up. And once you start catching it up, it will be very faster ahead. You don't worry that if you are catching it slowly right now, so it will be a very long journey ahead. It is not going like that. If you are making an efforts for starting since, like you say, 1 month or 2 months or 3 months, then when you will start catching it, everything will be cleared immediately. So don't make any haste. Just go patiently and go by that Roman alphabets only. Don't go by Devanagari. If you don't understand that, then it doesn't mean anything to read that. You can read that later in your second round of learning. But in round 1, you go by this Roman script only, and you will get it till you will finish this 15th chapter. Now you are on the 12th only, but when you will reach on the 15th and you will finish on the 15th, and we will be here to talk again, you will definitely say that now I am starting catching it up. It is not compulsory that you will be fluent or something. Don't make that haste. That will take 6 months. But you will start catching it up that I can pronounce the shloka. That is certain in 20 days. Okay, thank you very much. Appreciate it. I will continue trying. Thank you. Yeah, please. Go patiently. Just listen to it. Don't try to speak much. Try to listen it more and more. The audios we send, the videos we send, try to listen on your headphones all the day, the maximum time you can. That will all go in your unconscious, subconscious mind, and that will make all the changes you need. Okay, Khushi ji. Yes, beta. Yes, sir. मुझे ये पूछना है कि श्लोकास होते हैं ना, वो क्या हमें कंटिन्यूअसली बोलना चाहिए या ऐसे पॉज लेके बोलना चाहिए? थोड़ा पॉज लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, इतना पॉज तो लेना चाहिए कि सांस आ जाए अंदर। ठीक। जय कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आशु जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि जो सकाम भाव और निष्काम भाव ये क्या है? सकाम भाव और निष्काम भाव ये क्या है? जो सकाम भाव यानी जब मैं कोई भक्ति करता हूँ और उसके बदले में कुछ चाहता हूँ। मैं मंदिर जाता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे मेरा दिन अच्छा जाए। मैं मंदिर जाता हूँ और चाहता हूँ भगवान मुझसे प्रसन्न हो। मैं चाहता हूँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मुझे धन मिले, मुझे पुत्र मिले, मुझे विद्या मिले। जब बदले में मुझे कुछ भी आकांक्षा है, कुछ भी चाहिए, ये सकाम हो गया। और मैं मंदिर जाता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड। मुझे भगवान के सामने खड़े होना अच्छा लगता है, भगवान को देखना अच्छा लगता है, भगवान के दर्शन करना अच्छा लगता है। ये हो गया निष्काम भाव। ठीक है, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, एकदम सही। कामना, हाँ, कामना जुड़ गई तो सकाम, कामना नहीं है तो निष्काम, बस इतना ही। प्रेम जी। नमस्कार आसु भैया। एक्चुअली मैं अभी 1 वीक से ही जुड़ी हूँ इससे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जुड़े हैं। तो कल हम लोगों ने आपका देखा, जो आपने हिंदी में बोला वो बहुत अच्छा था। तो इसीलिए आज भी फिर से इंग्लिश में हम लोग सुन रहे थे। रूपल मैम ने बहुत अच्छा से बताया।
तो एक क्वेश्चन था भैया, कल सोचा मैंने पूछूंगी बट फिर अवॉइड कर लिया, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछने के लिए मैं फिर से ज्वाइन हुई आज। बोलिए। तो क्वेश्चन है भैया, मैं बचपन से ही हमारे घर में सब पूजा वगैरह करते हैं, तो मेरे इष्ट देव को मैं पूजा करती हूँ, सब करती हूँ। ऐसा नहीं कि अच्छा दिन है तो पूजा करूंगी या फिर कुछ जरूरत है तो पूजा करूंगी, ऐसा नहीं। फिर भी पता नहीं, शादी तक तो ठीक था, फिर शादी के बाद जो भी मैं काम कर रही हूँ उसका ऑपोजिट ही आ रहा है। मैं अच्छे सत्कर्म से सबका मन को देख के काम करती हूँ, लेकिन हर चीज को नेगेटिव ही सब ले लेते हैं। वो मेरा मेंटली नहीं रहता, क्यों वो सोच के भी नहीं करती मैं, पता नहीं वो पॉजिटिव चीज को भी उससे सब नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। देखो, एक तो इसका पूजा से कोई भी लेना देना नहीं। आपने कभी भी पूजा नहीं कर रहे हो, आपने रोज करी, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों बातें सभी के साथ हो सकती है। दूसरी बात, मैं ठीक करूं और मैं ठीक दिखूं, ये दोनों मेरी जिम्मेवारी होती है। कई बार हम लोगों को भ्रम होता है कि ठीक करना मेरा कर्तव्य है। अब जिसको जो समझना है समझे, किसी को जो समझ में आता है वो समझे। ऐसी हमारी मान्यता, ये हमको कष्ट देने का कारण बनती है। मैं जैसा करूं वैसा दिखूं, ये दोनों मेरी जिम्मेवारी है। मैं सही करूं। कैसे दिखना भैया? मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, सबके लिए सबको हेल्प कर रहे हो, उनके मर्जी से कर रहे हो, उनको अच्छा लगे वैसा कर रहे हो, फिर दिखना मतलब कैसा हो सकता है? उनको अच्छा लगे, ये मेरी भावना है कि उनकी भावना है। जैसे हम लोग कई बार दूसरों को अच्छा अपनी दृष्टि से करते हैं, लेकिन ये उसकी दृष्टि में भी उतना अच्छा है क्या जितनी हम उसको जितना अच्छा मान रहे हैं या जितना बड़ा मान रहे हैं। सामने वाला तो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो करना ही था। कई लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं, माता पिता ने हमको बड़ा किया तो क्या बड़ा बात हो कोई, तो उनका कर्तव्य था, उन्होंने किया। पढ़ाया तो क्या बड़ी बात कर दी, खिलाया तो क्या बड़ी बात कर दी। अब वो सामने वाला ऐसा मान ले तो माता पिता बेचारे क्या कर सकते। लेकिन ये हम सामने वाला जब आपके स्तर पे बात आएगी तो आप उसको जितना बड़ा मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं, उतना महत्वपूर्ण सामने वाला मानता है क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज टू नो द साइकोलॉजी, कि हम जिस बात को जितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं सामने वाला भी मानता है क्या। सामने वाला उसको उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता होगा तो आप सोचते रहिए कि मैंने एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सब दूसरे के बारे में चुगली वगैरह करते हैं, आपको वो चीज पसंद नहीं है, तो वो जगह पे आप चुपचाप बैठे रहोगे, क्योंकि साथ है तो आप कुछ बोल नहीं सकते, वहां पे चुपचाप बैठे रहोगे, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको किसी के बारे में चुगली करना पसंद नहीं है। आपको पता है वो चीज अच्छा भी नहीं, ठीक है, तो इसका आगे क्या? हाँ, तो वो केस में आप कुछ बोल नहीं रहे हो, इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हो, बोल के आप गलत हो रहे हो वो चीज पे। तो ये चीज पे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। एक मिनट। एक तो ये बात है कि सब कुछ दूसरों की राय नहीं होती। अगर मैंने किसी चीज को प्रिंसिपलिस्टिक पकड़ा है कि आई विल नॉट बी इन्वॉल्व इन सच टॉक्स, सो इट्स फाइन। अब दूसरे क्या सोचते हैं, ये मुझे उस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की चिंता, मुझे उनके प्रति क्या व्यवहार करना है उसमें तो है, मैं अपना क्या व्यवहार करूं इसके लिए नहीं करनी है। बात समझो, दोनों में फर्क है। मैं अपने लिए क्या कैरेक्टर बिल्ड करूंगा, अपने लिए क्या पैरामीटर सेट करूंगा। आई डोंट नीड अदर्स ओपिनियन इन दैट। मेरे जो बड़े हैं, मेरे पति, मेरे पिता, मेरे ससुर, मेरी सासू जी, उनकी ओपिनियन तो लूंगा, लेकिन आई डोंट नीड एवरीबॉडीज ओपिनियन टू बिल्ड माई कैरेक्टर। तो मैं किस चीज में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, किसमें नहीं होना चाहता हूँ, इट इज कम्प्लीटली माई डिस्क्रिप्शन। मैं उसको जैसा 20 साल तक आप जो भी अपना मेंटालिटी या फिर जो संस्कार हम लोग को मिले हैं ना, वो चीज में आपका पूरा फैमिली, आपके दोस्त वगैरह आपकी तारीफ करते रहते हैं, इतना अच्छा संस्कार मिला है। पूरा शादी के अगले दिन ही आपका वो जो संस्कार है उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर डिफरेंस होता है, आप उस चीज को बहुत अच्छा मानते होंगे, सामने वाला उसको वैल्यू नहीं करता, तो क्या वैल्यू है। देखो, इन बातों में सामने वाले को मेरी अच्छी बात अच्छी माननी चाहिए, ये मेरा आग्रह मुझे दुख देता है। वो तो अच्छा मानता नहीं कभी भी, लेकिन ये मुझे दुख देने वाला आग्रह है। इसलिए सामने वाले के प्रति व्यवहार में उसका, जैसे मेरा स्वातंत्र है कि मैं किसी के बारे में क्या सोचूं, वैसे उसका भी स्वातंत्र है कि वो मेरे बारे में क्या सोचे। आई शुड कीप हिम फ्री। वाई आई वॉन्ट टू बाउंड एवरीवन, कि जैसा मैं चाहता हूं लोग मेरे बारे में वैसे ही सोचे, और मैं ऐसा चाहता हूंगा तो उसके अनुरूप मुझे उसकी दृष्टि से व्यवहार करना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन हो जाता है। आप लेकिन अगर वो आपके सुनो, नेचर के अगेंस्ट हो तो अभी सुनो, आप पूरा सुनो। हाँ, बोलिए। ये बहुत मुश्किल है कि मैं सबके अनुरूप उनकी दृष्टि से व्यवहार करूं और सबकी दृष्टि में उतने पॉइंट्स लेकर ऊपर जाऊं। ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जीवन में 2-3 व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके लिए ऐसा करना चाहिए,
हमारे पति हो गए, हमारे ससुर जी हो गए, हमारे सासू जी हो गए, 2-3 लोग हैं हमारे, उनके जो बिल्कुल क्लोज सर्कल 5 का है, इसमें तो करना ही चाहिए। क्लोज सर्कल 10 का है, 10 में करना चाहिए। बाकी लोगों के साथ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को प्रिंसिपल लेवल पे सही रखना, सही प्रस्तुत करना, सही दिखाना, सही होना और सही दिखाना, इतना करना। फिर किसी को वो कैसा लगता है, क्या लगता है, कितनी उसकी अपेक्षा है, उसके ऊपर लिमिटेड कंसर्न रखना। कंसर्न नहीं रखना ऐसा भी नहीं, और ओवर कंसर्न भी नहीं होना, लिमिटेड कंसर्न। समत्वम योग उच्चते गीता कहती है, बैलेंसिंग इज द बेस्ट थॉट। तो बैलेंसिंग करना, कहाँ पर किसी बात को थोड़ा वेटेज देना है, कहाँ पे उसको इग्नोर करना है। ओम इग्नोराय नमः, ये मंत्र अपने पास होना चाहिए। और जिन बातों में बहुत ज्यादा उलझन पुलझन होती है, वहां ये मंत्र लिया और आगे बढ़ गए। भगवान ने मुंह एक दिया और उसके ऊपर 2 द्वार दिए, एक दांत का एक होठों का, है ना, और कान 2 दिए और द्वार एक भी नहीं दिया। क्यों दिया? क्योंकि सुनना सब कुछ, लेकिन जो काम का है वो अंदर ले जाना, वरना दूसरे कान से निकाल देना। बोलना सब कुछ नहीं, 2 बार सोचना, पहले दांतों से बंद करो, फिर होठों से बंद करो, दोनों में जरूरी लगे तब बोलो। हाँ, 2 गेट दिए तो है ना रोकने के लिए, वहां पे एक भी नहीं दिया। आप नहीं सुनो, ऐसा कोई अधिकार आपको भगवान ने दिया नहीं। तो सुनना, इसलिए सुनने की आदत होनी चाहिए, सहन करने की आदत होनी चाहिए। अपने प्रतिकूल बात, अपने मन को नहीं अच्छी लगती ऐसी बात भी लोग हमसे कहेंगे, हम उसको सहन करें। ये सहन शक्ति, ये टॉलरेंस, ये हमारे कैरेक्टर को बुल्ट करती है। बेशरम हो जाना दूसरी बात है, ध्यान रखना, बहुत फर्क है टॉलरेंस में और बेशरम हो जाने में फर्क है। टॉलरेंस अच्छी बात है, इट इज अ सात्विक कैरेक्टरशिप, एंड बेशर्मी ये बुरी बात है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर, दैट इज अ बेशर्मी, वो अच्छी बात नहीं। तो आई डोंट केयर वाली में अच्छी बात नहीं, लेकिन इन बातों को मैं सहन करूं, इट्स ओके। सबका अपना थॉट। अगर कोई चीज अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पे आए तो हम लोग बोल सकते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता, ये सब अपना, ये जहाँ पे हमको नहीं करना होता है वहां में सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड ले आते हैं। देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट आपका होगा तो आपके आसपास के लोग आपके लिए है, आपके पतिदेव किस लिए है, आपके सास ससुर किस लिए, आपके माता पिताजी किस लिए। हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए ये लोग हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट में ये कुछ नहीं होता, ये हमको जो मन का नहीं होता वो हम सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले आते हैं, ये फालतू बात है, बिल्कुल फालतू बात। अपना आदर्श रामायण को रखना। माँ कैकेयी ने क्या किया राम जी के साथ, बोलो। अभी मैं इससे पहले वाले प्रश्न में किसी बहन को समझा रहा था, वो ऐसे ही वो अपने पिताजी के लिए कुछ कह रहे। मैंने उनको ये बतलाया कि हमारे शास्त्रों में ये अधिकार कहीं नहीं है कि हम अपने बड़ों के लिए कोई निर्णय करें। क्यों गलत बात को समझाना चाहिए? उनको बिल्कुल नहीं समझाना चाहिए। अगर गलत बात को समझाना सही होता तो कैकेयी ने तो राम जी के साथ बिल्कुल गलत किया। तीनों भाइयों को जाके समझाना चाहिए था, चारों बहुओं को जाके खड़े हो जाना चाहिए था, दोनों माताओं को जाके खड़े हो जाना चाहिए था कि यू आर डूइंग रॉन्ग। बट नोबडी गॉन, कोई भी नहीं गया कैकेयी के पास, एक भी व्यक्ति गया नहीं कि तुम गलत कर रही हो। और उस समय नहीं गया ऐसी बात नहीं, 14 साल तक भी गया नहीं। और 14 साल के बाद लौट के राम जी ने आकर कोई सार्कास्टिक निगाह से उनको देखा नहीं, ये देखो तुमने किया, मैं हो क्या आ गया। आके श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। ये आदर्श है हमारा आदर्श विरोध करना नहीं, हमारा आदर्श अधिकार नहीं, हमारे आदर्श कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्यों की परवाह करूं। अधिकार या अधिकारों का परवाह करना यूरोपियन कल्चर है, अपनी ड्यूटीज की परवाह करना इंडियन कल्चर है। यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। ये सारे लोग अधिकारों की चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट बात करते हैं। मैंने कभी सुना ही नहीं कोई सेशन यूरोप का जिसमें ड्यूटीज की बात आती है, सुना ही नहीं। और आप भारत में पढ़िए तो क्या मिलेंगे, बालकों के कर्तव्य, बालिकाओं के कर्तव्य, नारी धर्म, स्त्री धर्म, राजा धर्म, पुरुष धर्म, मित्र धर्म। हमारे सब धर्म ही धर्म है, सब ड्यूटीज ड्यूटीज ड्यूटीज। अधिकार का एक भी चैप्टर ही नहीं है। वी डोंट टॉक अबाउट राइट्स, वी टॉक अबाउट लाइबिलिटीज, वी टॉक अबाउट ड्यूटीज। जितना वो फोकस। अच्छा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप अधिकारों की जितनी बातें करिए उससे केवल झगड़े होते हैं, मिलते नहीं है। वो किसको मिले आज तक बतला? मिलते नहीं है, झगड़े होते, अपने को अशांति होती। कर्तव्यों के चिंतन से होना तो वही है जो हो रहा है, अपने को शांति रहती है, अपने को आनंद रहता है। राम जी वनवास में गए, आनंद से गए, 14 वर्ष बाद आए, आनंद से आए। कोई मन में क्लेश नहीं है उनके, मेरे साथ गलत हुआ ये भाव ही नहीं उनका। कोई बात नहीं, माँ ने भेज दिया, चले गए। माँ ने गलत भेजा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं मुझे। अपना आदर्श इसको रखना है। और इसलिए घर में रोज डिनर टेबल पर बच्चों के साथ एक स्टोरी पढ़ो। गीता प्रेस की बहुत अच्छी पुस्तकें आती है, चौकी कहानियां, वीर बालक, आदर्श बालिकाएं, भक्त बालक। एक कहानी रोज पढ़ो, अपने मन में, बालकों के मन में अपने आप ही उस प्रकार के संस्कार निर्माण गए। कोई मिलेगा ही नहीं जो इसमें अधिकारों की बातें करता हो। सब कर्तव्यों के लिए स्वाहा होने को तैयार बैठे।
तब फिर हमको ये चिंता नहीं लगती, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट फालतू जैसे ये सब फालतू शब्द ही नहीं मन में आते। ठीक है, शुक्रिया भैया। राम हरि जी। Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। Actually, yesterday also I have taken your class, so I was very happy to see you here also. And again, I am having some 2-3 questions. If you allow me, I can speak in Hindi also. Yes, you can speak in both, no problem. Okay, thank you. मैंने कल प्रश्न पूछे थे सेवा के बारे में, उस पोर्टल पे गया हूँ, उसमें बहुत सारी सेवाएं मिली और मैं उसमें अपनी योग्यता के हिसाब से आई विल अप्लाई फॉर दैट। प्रश्न मेरा यह है कि जीवन में गुरु की महिमा बहुत बताई गई है। अब हम जो है, हमारी एज 57 साल है और हम ये भारतीय वायुसेना में अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो और गीता घर में शुरू से ही पढ़ी जाती रही है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से आते, पहले से ही मतलब हम पाठ करते रहे और बार बार करते रहे। उसमें एक वर्णाश्रम व्यवस्था आती है, उस वर्णाश्रम को देख के मन में डाउट होता है कि लाइफ तो ऐसे ही निकल गया, क्षत्रियपन में हम तो ब्राह्मण थे, नंबर 1 बात यहाँ पे निकल गए। एक दुख थोड़ा सा वहां पे होता है, हालांकि वो अपना जो नियम है वो ब्राह्मण वाले हम सर्विस में रहते हुए भी करते रहे, दारू को हाथ नहीं लगाना, ये चुटिया भी अपना आज तक रखे हुए हैं, सर्विस में रहते। तो ये सारी चीजें करते हुए भी फिर भी दुख रहता है कि ये लाइफ ऐसे ही निकल गया, 57 साल निकल गया, अब क्या करें। उस 57 साल के दौर में सारे शास्त्रों का पठन, पूरे गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें लाना, साधक संजीवनी, जितनी भी राम सुखदास महाराज जी की किताबें वो, और जहां से भी जितना भी साहित्य मिला, संप्रदायों में जाना, जितने भी लोग सत्संग, वो सारा चलता रहा आज तक। उससे क्या हुआ, अब ये कूड़ा करकट भर गया अंदर पूरी तरह से। तो वो कहते हैं ना, एक इन्फॉर्मेशन जो कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन इतनी गैदर कर ली वो, लेकिन उसका अंदर से कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। बस ये है कि कहीं आएगा तो वो अपनी आपने जहां से प्रश्न का आरंभ किया वही बात सही है। बिना गुरु के जीवन में ये बातें सदती नहीं है। आपने बहुत बढ़िया बात कही। आपने जो किया वास्तव में वो प्रामाणिक है, और मैं वो सारी बातें आपकी बिल्कुल एज इट इज समझ गया, जैसे आप कहना चाहते हैं। जो नहीं कह पाए वो भी समझ गया। तो जो अब गुरु कहाँ ढूंढूं, मेरा समस्या यह है, प्रामाणिक गुरु का मिलना इतना कठिन हो गया है कि मैं तो पूरा 57 साल से ढूंढ रहा हूँ। अरे मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। प्रामाणिक गुरु का मिलना तो कोई मुश्किल है नहीं। प्रामाणिक शिष्य मुझे आज भी एक भी नहीं मिला। मैं आपको गुरु तो प्रामाणिक हिंदुस्तान के अंदर 500 की सूची भेज सकता हूँ, लेकिन शिष्य सदस्य शिष्य एक भी नहीं बतला सकता। शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, गुरु तो बहुत सरल है। भारत की धरती पर कोई मुश्किल नहीं। प्रामाणिक गुरु के लिए मैं आपको 2-3 पैरामीटर्स देता हूँ। उतने पैरामीटर्स रख के आप देखेंगे तो भारत में संतों की, सच्चे गुरु की कोई कमी नहीं। असली है तभी तो नकली माल चलता है, असली होगा नहीं तो नकली आएंगे कहाँ से। इसलिए वो असली की कमी नहीं है, ये बात पहले समझिए। हम नकली में इसलिए फंस जाते हैं कि हमारे पैरामीटर्स ठीक नहीं होते, और हम अपने किसी आग्रह से या अपने किसी लालच में गुरुजी बना लेते, तो वो गड़बड़ हो जाती है। पहली बात, जो गुरु हो वो आचार्य परंपरा से, हमारे संप्रदायों की परंपरा से, किसी परंपरा से दीक्षित होना चाहिए। वो ऐसे किसी परंपरा से नहीं होना चाहिए जो हमारे आचार्यों से, संप्रदायों से जुड़ी हुई नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जो गुरु है उससे स्वयं को घोषित किया हुआ गुरु स्वयंभू गुरु है कि उसके गुरुजी ने उसको गुरु बनने की आज्ञा दी है। ये बात मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, जो गुरु हम ढूंढ रहे हैं वो शास्त्रों का पठन करने वाले, उसका पाठन यानी उसको पढ़ाने वाले और उसको जीवन में लाने वाले हैं कि नहीं। उनके जीवन में कुछ सदाचार दिखता है कि नहीं, वो रोज संध्या वंदन करते हैं कि नहीं, वो रोज सवेरे कितने बजे जगते हैं, कितने बजे सोते हैं, आदि सामान्य बातें तो हमको देखने को मिल ही जाती है। तो इतना उनके जीवनचर्या के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। और चौथी बात, वो अपनी पूजा में लगाते हैं कि भगवान की पूजा में लगाते हैं। आजकल बाढ़ आई हुई है फर्जी वालों की, जो कहते हैं साहब बस तुम 10वांश मुझे देते रहो, 10% गिव इट टू मी, रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट इज ऑल फुलिशनेस। ये कभी नहीं होने वाला। तुम माओ मेरे पास, मेरी मूर्ति लगा के पूजा करो, तुमको ना भगवान से मतलब ना किसी, और मैं पहुंचा दूंगा तुमको। ये शॉर्टकट कहीं शास्त्रों में आता नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। इसलिए 4 पैरामीटर्स अगर आपने रख लिए कि वो किसी आचार्य परंपरा से और संप्रदाय से जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरा, वो स्वयंभू नहीं होने चाहिए, उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा देनी चाहिए, उनके गुरुजी ने उनको, उनके गुरुजी ने उनको, उनके गुरुजी ने उनको। ये परंपरागत होना चाहिए। ये बीच में एक भी स्वयंभू आया तो सारी परंपरा गलत। तीसरा, शास्त्रों का पठन पाठन और अभ्यास करने वाले होने चाहिए। और चौथा, अपनी पूजा नहीं कराकर भगवान की पूजा में लगाने वाले होने चाहिए। ये 4 बातें आसानी से हम लोग देखने के लिए योग्य है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मैं नहीं देख पाऊंगा, बिल्कुल देख सकते हैं। ये 4 बातें देखने के लिए आप संत पूछेंगे तो मैं आपको 500 लोगों की लिस्ट तो भेज सकता हूँ।
तो कोई कमी नहीं। लेकिन स्वीकार कौन करेंगे? अब क्या 500 के पास जाना पड़ेगा? नहीं, 500 के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो, आप अभी नेट पे तो आप एक्टिव है, तो यूट्यूब आदि पर आपको उनकी कथाएं आदि सुननी चाहिए, उनके प्रवचन सुनने चाहिए, तो जिसमें मेरा मन जुड़ने लगे, जिनके प्रति मेरी अनुरक्ति आ गई, जिनके प्रति मेरा श्रद्धा भाव निर्माण होता है, ऐसे गुरु को मैं पहले देखूं, फिर जाकर निकट से उनके पास एकाध उनकी कथा सुनी, उनके प्रोग्राम अटेंड किए, उनके दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, वो फीलिंग आता है कि मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। समस्या यही है क्योंकि इतनी लंबी उसमें अभी पीछे के टाइम में यही किया है, मतलब जो सारे ही अच्छे लगते हैं जब उनके सत्संग सुनते हैं, क्योंकि अपना बहुत अच्छे लगते हैं, फिर जब उनके रूबरू जाकर के सत्संग करते हैं तो फिर वहां पे वो प्रोग्राम शुरू हो जाता है, वही दीक्षा वाला, फिर वहां से छोड़ के दूसरे के पास। लेकिन उनके सत्संग और वो सारी चीजें तो बिल्कुल एक जैसी लगती है। देखो, बाद में जाकर मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। आप पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज का सत्संग सुनिए, आपको वो जो गड़बड़ मिली वो कभी नहीं मिलेगी। आप वृंदावन के संत है, मैं अब 2-3 नाम लूंगा तो मेरे दोष नहीं लगे, मैं डरता हूँ कि इतने सारे हैं तो मैं 2-4 ही लेता हूँ। मैं आपको उदाहरण के लिए 2-4 बताता हूँ। राम सुखदास जी को मैं बहुत सुनता था। राम सुखदास जी महाराज तो अब है नहीं, वो तो अब नहीं रहे, श्रेष्ठ है, वो तो कोई बात ही नहीं। फिर मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज को सुनिए, काशनी पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद जी महाराज को सुनिए। ये सारे संत शास्त्रज्ञ संत हैं, इनमें कहीं कमी नहीं है। आप इनकी ये कभी अपनी पूजा नहीं कराते, ये शास्त्रों को दिन भर घोट कर जीवन में जीने वाले संत। और ये 3-4 नाम नहीं है, ये मैं आपको कितने भी बता सकता हूँ, ये बहुत है। अब इनमें से जिस पे आपकी श्रद्धा ठहर जाए उसको आप चुन लो, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ, और मैं चुन लूं ये भी तो मेरी खाली मानस है। वास्तव में तो वो गुरु हमको चुनते हैं, वो प्रारब्ध से होने वाली बात होती है। अपने को प्रयास करना पड़ता है, हम प्रयास नहीं करेंगे तो प्रारब्ध में गुरु लिखे तो भी नहीं मिलेंगे हमको, इसलिए प्रयास तो अपने करना पड़ता है। इसलिए अपना प्रयास करना, और समय आने पर भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। तीव्र इच्छा होनी चाहिए, आपकी है ही, वो दिख रही, तो आप प्रयास उसके लिए और करें, प्रामाणिक प्रयास, और वो हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बहुत घाट मत घूमो, प्रामाणिक घाट जाएगी, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आपने ऐसे एक बात करी राम सुखदास जी महाराज की बात। अभी राम सुखदास जी महाराज से मिलती जुलती बातें कौन लोग करते हैं? कितना आसान है समझना, बहुत आसान है। जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे अभी कुछ जो घर की जिम्मेदारी होती है, पहले क्या है कि पहले घर संभालो, फिर जो है समाज को संभालो, फिर स्टेट को, फिर उसके तरह से जाओ। अब घर में कुछ जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाई क्योंकि अब ईश्वर की ऐसी इच्छा रही होगी कि इस उम्र के बाद भी तीनों जो बेटे हैं उनको नौकरी नहीं लगी, बेटी की अभी शादी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में अब रिटायरमेंट का भी समय आ गया। जैसे आपको बोला, अपनी प्रगति तो चल रही है जो अंदर से चल रही है, और वो ये भी मैंने सत्संग में सुना कि जिसको 50 साल के बाद भी अगर वैराग्य की थोड़ी बहुत भी झलक नहीं आ रही है, घर में रस आ रहा है, तो समझो उसने जीवन सही से नहीं जिया। तो हम और 50 क्रॉस करने के पहले से ही आने लगा कि जल्दी से थोड़ा सा भजन करेंगे। घर में भी चल रहा है लेकिन और अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन वो भगवान ने इच्छी पूरी नहीं हुई। ये बातें ठीक है, लेकिन गीता ये नहीं सिखलाती। गीता बोलती है समत्वम योगुच्यते, बैलेंसिंग करो लाइफ में। और इसलिए अपने सिर पर जितने दायित्व है वो भगवान की आज्ञा से मुझे उसका निर्वहन करना है। मैं उस रोल में, मैं पिता के रोल में हूँ, तो पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति जितने मेरे कर्तव्य है उसका निर्वहन करना मेरा धर्म है, और वो भगवान की आज्ञा है, ये मानकर उसका निर्वहन करना। मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ अपने पुत्र पुत्रियों पर, मैं भगवान की आज्ञा से उस सेवा में नियुक्त हूँ, उस रोल पर नियुक्त हूँ, और वो करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं वो करूँ। जब वो इस भाव से आप करेंगे तो वो कार्य, वो जो उनके लिए नौकरी का कार्य है, शादी का कार्य है, वो कार्य भी आपकी पूजा हो जाएगा। जब हम भगवान की सेवा है इस भाव से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, वो बच्चों का लालन पालन भी हमारी पूजा बन जाता है। जो ही करूँ सो ही तेरी पूजा, आपने सुना? तो मैं जो करूँ सो तेरी पूजा कब होता है? जब मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो भगवान की आज्ञा से है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, और मैं उस कार्य में नियुक्त हूँ, मुझे वो करना है, तो ये करिए। तो आप ये मत सोचिए अध्यात्म कोई अलग रास्ता है, गृहस्थ कोई अलग। गीता के पढ़ने वाला और गीता को जीने वाला व्यक्ति को पहली शिक्षा भगवान ने ये दी कि योगस्थ कुरु कर्माणम, तुम योग में स्थित हो और अपने कर्म करो, जो कर रहे हो वही करो, कोई दूसरा कुछ नहीं करना है। जो कर रहे हो वो योग में स्थित करो, योगी बनकर करो। तो जो आप कर रहे हैं वही करते रहना है, कोई आपको ऋषिकेश जाके नहीं रहना है, ये पहले मन से निकाल दीजिए। जहां रह रहे वही रहना है, जिन लोगों के साथ रह रहे उन लोगों के साथ रहना है, और वहीं पर रहकर अपने मन की स्थिति को वैराग्य पे ले आना है। वैराग्य का अर्थ जो आप खा रहे हैं वो भोजन के प्रकार नहीं बदलना है,
उन भोजन में जो आसक्ति है वो छूटनी है, पदार्थों की आसक्ति छूटनी है। भोजन तो वही करना है, भोजन थोड़ी बदलेगा। इसलिए वो तो आप जहां पर है जैसे है वैसे ही हो सकता है। तो वैराग्य धीरे धीरे आना चाहिए, वो बिल्कुल लाइए, लेकिन उसके लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, मेरा लगा है। लेकिन अब मेरे को चिंता इसीलिए हो रही है, हालांकि अब वो चिंता भी ईश्वर के द्वारा दी हुई है, और चिंता अब मेरे को इसी चातुर्मास के प्रथम दिन ही मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया गया जो शायद मेरी नजरों से कहीं दूर भी था, ऑटोमेटिक आया मेरे पास। तो वो एक बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा ही है, और वो अपनी तरफ ले भी जा रहे हैं पूरी तरह से। और मुझे लग रहा है कि आगे का जीवन भी आप लोगों के निर्देशन में बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा। वेंकटेश जी। सर, भैया जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। I am residing in Chennai. Actually, I faced a lot of calamity in my life 2 years before. My daughter died in a tragic road accident. So everything came to a standstill in my life. But I got Guru and I got Paranyasam from Ahobilamat and all that in 2012 itself, end of 2012. So my question is, how to get the Mahavishwas? That is, Geeta, basically, we know that, we see that everything is predetermined, everything is going according to the will and wish of God, and according to our karma. But it is bringing that into our practical life. Each and every second, we have to think that whatever is happening is happening for good. How to bring about it? Even though we speak about it, even though we believe it, we talk, we propagate it, but it is I got your question. Let me answer. I got your question and I understand completely what you want to say and ask. And it is not your problem, it is everyone's problem around me, including me. So we all want to get on that status that we know everything, we have read so many things, we have listened so many things, and we believe that it is the truth, it is the ultimate truth. Then also, why we are not able to follow it? The same question Arjun asked Lord Krishna in chapter 3. That Atakena prayuktoyam papanchariti purusha. I am not a bad person. Then why I am involving in the sins? Who enforced me inside towards the sin? While I don't want to do any sin. Why we all do the sin? Arjuna asked in chapter 3. Krishna told, Krodha Kama esha krodha esha rajoguna samudbhava. This kamana, this desire, and this krodha, anger, this rajoguna, this involves you in this sin. So we say these things, that is truth, but we have these materialistic desires. We have these so many unfulfilled desires inside us, and it is increasing day by day, every day. The more we are fulfilling it, the more it is coming by day. So controlling our desires, one thing. Second, go and be with the people who are ahead to us. Be in the satsang of the people who are on the same path and they are ahead to us. So when you are in this Geeta Parivar, when you are in this infrastructure, and similarly more infrastructures like this. So when you are involved with such programs, with such environment, then it changes your brain programming slowly. It doesn't happen overnight. It happens slowly, day by day. So the more time you connect to this environment, the more energy and flow you give to these environments, you feel that changes inside you. You feel that thought process changing inside you, and it happens. So reading more scriptures, listening to it, be with the people who are into it. So these are the ways to do it, and controlling your desire, that is the most important thing. So when we control our desire and we be in the satsang, then we get that Mahavishwasa or Shraddha you want to ask. Actually, the day after my daughter died, I started writing Ramanama for 1,000 times, 80 times per day. And still now I am writing. Even when I am listening to this question answer session and even the explanation, I am writing the Ramanama. So, but with the only aim, my only aim was I have to get the death, because death is the ultimate reality.
went to such a very what to say depressive, total depression and loss of everything. I don't want to live in this life, but I have my duties of my daughter, second daughter. I had to get her her education, then marriage and all that, and I have to take care of my wife also. But still, some things are there. But how to remain like a water on lotus feet? That's how I must learn from the Geeta. That is a process of practice. Yeah, that is a process, and that requires a lot of practice. So when you keep practicing, it happens. And when you're into Geeta, Geeta taught us that you have to be as you said, lotus in the water. You don't need to go anywhere else to attain this ultimate liberation or something you want to call it. But you have to do whatever duties you have, and you have to fulfill all your duties by surrendering yourself to God, that you're the appointment man. Kar pranam tere charanon mein, lagta hu ab tere kaaj, palan karne ko aagya tav, main niyukt hota hu aaj. I am just an appointed one by you to fulfill my duties in the role you appointed me. So when I am father, I have to fulfill my father duties. When I am employer, I have to fulfill my employer duties. When I am employee, I have to fulfill my employee duties. I am a sportsman, I have to fulfill my sportsman duty. I have a soldier, I have to fulfill my soldier duty. So in whatever role I am, I have to fulfill my duties. That is the ultimate thing. And when I am fulfilling these duties by considering it is as a God's will, as you stated earlier, then you are on the right path. Someday you will reach. Path of renunciation, living in Grahasthashrama. How to hold the path of renunciation? Renunciation in Grahasthashram, we don't need to renunciate the material. We have to renunciate the asakti towards it, the attachment towards it. We don't need to change our food or our clothes or our home. We need to live in the same home. We need to eat the same food. We need to wear the same clothes. But we are not attached to that. If something is not happening the way I like, I'm not going to miss it. I'm not going to ask for it. So that is renunciation. Renunciation is not renunciating the padartha. You need to renunciate the asakti of the padartha. That is it. But one day I want to embrace the sannyasa ashrama in this life. Is it possible by using the Geeta? Geeta doesn't talk much about it, and Krishna doesn't like it also. Yes, Lalita ji. Lalita Sharma ji, please unmute. अनम्यूट करना होगा आपको. हाँ, अब जय श्री कृष्ण. ये मेरा भाव है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई चीज पढ़ने बैठूं तो उसमें मुझे बहुत आनंद आता है, लेकिन घर की ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं कि भाव रहता है हमेशा पूजा करने का, फिर घर की कोई जिम्मेदारी आ जाए तो पता नहीं दिमाग इधर से उधर हट जाता है थोड़ा सा. कहीं जैसे भागवत गीता जो भी मिले पढ़ने को तो उसको देखती हूँ तो लगता है कि इसमें कितनी घुल जाऊं, कैसे क्या पालूं, पर पता नहीं जिम्मेदारियां भी बहुत रहती हैं लेडीजों की. देखो, तो कहीं से आओ तो घर में लग जाओ, फिर थोड़ा बहुत आधा अधूरा रह जाता है, मन नहीं लगता, फिर उसमें बैठती हूँ, इधर उधर नींद भी आती है पूजा में, पता नहीं क्यों मन में बहुत रहता है. मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसका उपाय बताता हूँ. घर की जिम्मेदारियों को पूजा से अलग मत मानो, उसको पूजा का पार्ट बना लो. भगवान ने मुझे जिस रोल में नियुक्त किया है, उस रोल से जो भी जिम्मेदारी मैं पूरी करता हूँ उससे भगवान की सेवा करता हूँ. आप भोजन पकाते हैं वो भी भगवान की सेवा है, हम झाड़ू लगाते हैं वो भी भगवान की सेवा है, हम घर के लोगों की सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा है. जब ये भाव हम कर लेंगे तो हमको अलग से बैठकर ही पूजा करनी है, ये भाव का आवश्यकता नहीं रहेगी. अलग से बैठकर कुछ समय तो दिन में करना ही चाहिए, सुबह उठ के अपनी पूजा करनी है, रात की पूजा कर, जो हमारा नियम है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन वही करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, या पूजा वैसे ही करना चाहिए वैसी बात नहीं है. हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी भगवान की पूजा. मैं भोजन पका रही हूँ, ये भगवान का ठाकुर जी का भोग मेरे हाथ से बन रहा है, अब ये भाव कर लिया तो भोजन पकाने का काम आपका पूजा हो गया कि नहीं, बोलिए. मैं जो भोजन पकाऊं
उससे सबके भीतर बैठे परमात्मा प्रसन्न हो जाए खाकर। ये भोजन परोसने का भाव अपने आप ही भगवान की पूजा हो गया कि नहीं? तो जो मैं काम कर रहा हूँ उसको भगवान से जोड़ लूं तो अपने आप ही वो काम भगवान की पूजा हो जाएंगे। और फिर वो जो जिम्मेदारी आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी आ पड़ती है और इसके कारण मेरी पूजा नहीं होती, इसके कारण मैं गीता नहीं पढ़ पाती, वो अपना भाव कम हो जाएगा। हम तो जो कर रहे हैं वही गीता पढ़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसी में मेरी पूजा हो रही है, ये भाव आता है। जैसे मेरा मन लगता है कि मैं पूजा करूं, 1 घंटे का मेरा मन है कि मैं 1 घंटे शांति भाव से बहुत पूजा करूं, तो ज्यादा लंबा टाइम की मन करेगा तो नींद आएगी, कहीं पाठ वाठ कोई लेके बैठू। जैसे मैं संस्कृत कम सीधा 1 घंटे का नियम नहीं करना। अभी आप 15 मिनट करते हो मान लो, या 20 मिनट करते हो, तो उसको 5 मिनट बढ़ाओ, 25 करो। फिर 25 पर 2 हफ्ता टिक गए, अब उसको 30 करो। फिर उस पर 3 हफ्ता टिक गए, तब उसको 35 करो, तब आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन मैं सीधा 15 मिनट से 1 घंटा करूंगा तो फिर तो मन भागने वाला ही है, मुश्किल काम है ना। जैसे कोई कहता है कि जैसे गुरु दक्षिणा ये है वो है, तो मुझे 5-7 साल हो गई जैसे इसमें साधना में थोड़ी सी, तो ये लगता है कि अभी मैं कुछ आगे थोड़ा और बढ़ूं तब ये सारा पढ़ूं सीखूं, तब ये लगे कि गुरु दक्षिणा क्या चीज है, मैं जानती नहीं, अभी तो पहचानती नहीं, तो गुरु दक्षिणा लेने का भी अभी मेरा भाव नहीं रहता कि और आगे देखूं थोड़ा क्या है साधना। हाँ देखो, बिल्कुल देखो। और अभी आप गीता परिवार में आ गए और ये विवेचन आप सुनने का, जब अभी लाइव भी आपको नहीं सुनने को मिले तो आप आदमी यूट्यूब पे सुन सकते हो, तो आप समय में परेशान मत हो, जब समय हो तब सुनना। अपने आप ही धीरे धीरे आपको जो आगे आप ढूंढ रहे हैं वो मिलता जाएगा, अपने आप ही मिलता जाएगा। ठीक है। और संस्कृत नहीं जानती मैं, थोड़ा संस्कृत कम हम जानती सब हूँ। सिखा देंगे, आप चिंता ही मत करो, आप लगे रहो, बस छोड़ना मत, क्लास मत छोड़ना, सिखा देंगे, सारी सिखा देंगे। जय श्री कृष्ण। ठीक है, जय श्री कृष्ण। You can end it now. जय श्री कृष्णा हो गया शायद, सबका हो गया। आशु भैया जी सबका हो गया शायद ना? जी प्लीज सम अप। Ashu bhaiya, thank you so much for reminding us about our duties and our dharma. Because rather than running behind and demanding our rights, we should try to do our duties well. And I think that is the best takeaway of today's question and answer session. There were many of them, but I think this was the best because duties are more important and we have to do our duties well and everything will fall in place. And I extend my heartfelt gratitude to Ashu Bhaiya ji and Rupal Didi. She also cleared lots of doubts today of our sadhakas, and I think all were very happy. On behalf of Geeta Parivar and myself, I extend sincere thanks to the technical team and all those who have been at the backstage for their relentless and efficient efforts in making the session a great success. May I take this opportunity to thank all those who attended this session. Please do continue your sessions to enrich your spiritual knowledge. Today, more than 450 participants were there. It was really heartening to see so many. And now it's time for Samapan Prarthana. I request Sangeeta Patel ji from North Carolina, US for Samapan Prarthana. She's a medical laboratory scientist. She joined Geeta Parivar in March 22 and is doing seva as technical assistant in L1 and L2. May we all seek the blessings of Shri Krishna. Sangeeta Didi, please. Yes, Jai Shri Krishna. Yogesam Satchidanandam Vasudevam Rajapriyam Dharma Samstapakam Veeram Krishnam Vande Jagadguru Krishnam Vande Jagadguru. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. That was very loud and clear and very sweet rendition. Thank you, Didi. May the knowledge gained today make our week ahead brighter and more beautiful. We shall see you back on another enlightening session next week. Till then,